It had to be. Thank you, ladies and gentlemen. Good morning on this beautiful spring rainy day, and the sun has come out. I'm so glad you're here instead of sitting in bed on a Saturday morning with your chai and samosa. Hopefully, we can give you some chai and samosa soon. Those of us who are joining online, thank you very much for logging in. And if you haven't logged in as yet, you absolutely must. Because in this time and age, what is more important to us than being healthy and ensuring the health, well-being of our family and friends? So we have this very eminent guests coming today, people who we are so grateful to, especially because our generation has come out of a pandemic. We are grateful to those physicians, those healthcare workers, sanitation workers, policy framers, policy makers, those who implemented policies, hospitals, those who organized it all for us to ensure that today we are alive and we can sit here and discuss about how we can improve our systems so that, God forbid, we have challenges like what we faced, we are able to handle it in a better manner. It's what India did is quite an amazing story, but I think I will let it to the health minister who's going to be joining us soon, and to Dr. Paul and the others who are coming to tell you about how we manage the pandemic, how we are looking ahead, the focus areas, what we are doing for diagnostics. In fact, briefly, let me tell you today what we're going to be talking on. It's the challenges to the health sector in one session. So we're going to be having accessibility, affordability, infrastructure, role of private players in the health structure. After that, the next panel, we're going to be talking about technology divide. It should not be sharp. Why is it sharp? When is it going to be less sharp? When I say divide, I mean the role of digital artificial intelligence in the health sector. Then we're going on to holistic health. We're talking about yoga, Ayurveda, alternative medicine with long-term view about how we can remain healthy and happy. We also are going to be talking about lifestyle diseases among the young, how to cope with those. This is the first session that we have of ANI Dialogues, and I'm glad we're beginning with the health sector. We hope to take this forward. We have a young team which is working very hard under Naveen Kapoor, of course. Everybody knows who he is if you've dealt with ANI. And we have a young, energetic team who's keen to take these dialogues, these sessions outside of the confines of just the capital city. But today we're beginning with here because I think now with technology, geographical boundaries don't matter. So I'm sure there are people in different corners of the country and abroad who are joining in to listen to these conversations. At ANI, we worked all through the pandemic. We worked really hard. We lost family and friends. We lost colleagues during this. And we continue to look after our families who are suffering from long COVID. So among us, many journalists who have battled with COVID, who battled with loss during this period,
And it's taken a tremendous toll because, when we are working as journalists, when we are working in the media, there really is no time for us to think about our afflictions, about our pains and sufferings, about people close to us. It's only after it's over that we look, and we are so grateful to the support that we got from healthcare workers, from family and friends, from physicians who helped us during crisis periods. So a big shout out for those who helped the media during this trying times. Short introduction. I'm going to hand over to our moderators, Richa and Shalini, who are going to be taking over from here. We have Dr. Paul. Everybody knows Dr. V.K. Paul. He's going to begin. Dr. P.N. Ranjan, Mr. Amit Kumar Singh, Mr. Arpita Chadda. We also have Dr. Srinivas. We have Malika Bajaj, who's going to provide the spark. And we have Dr. Harsh Mahajan. We're going to have Dr. Tanuja Nesari. We're going to have Acharya Balakrishna. So talking about holistic health. And we are going to be having the chief guest today, which is Dr. Mansukh Mandavia. He's been so amazingly helpful to us in dealing with crisis situations we had during the pandemic. And then we have Dr. Sandeep Nair, we have Dr. Dhiren, we have Dr. Neeta Radhakrishnan. So basically we have professionals leading these conversations, and we have professionals who are going to be, if we have the time, answering your questions. If it's not possible to answer your questions, I will leave it to the moderator to judge whether we have the time or not. So once again, thank you very much for being part of these dialogues. As the first dialogue, we would have been so happy if we could have had our chairman today present. He's delayed right now in getting ready and coming. He's 92 and in the pink of health, knock on wood, and a source of inspiration for us. Begins his day with Kalakan, and I take apologies for anybody who's dealing with diabetology out here. But I think his generation of people who are in their 90s are not really looking at these afflictions with fear. They just deal with it as a lifestyle thing, which they'll deal with it when it comes. So he will be joining us shortly. He continues to be a source of inspiration for all my young colleagues. So over to Richa and the first panel. Thank you. Thank you so much, Smitaji, for a warm welcome to all the guests here. I'm Richa Jain Kalra, the moderator for today's panel discussions, and it's an honor to have you all. We have some very distinguished guests, subject matter experts, renowned specialists, and a lot of distinguished panelists with us to discuss various aspects of health. Health is the foundation of everything we do, not just the physical well-being. It's the foundation of a sound life. And that is why it is said, good health is real wealth. I think for India to take the road of development like we want it to, we need to address different spectrums of the health sector. And that is why at the ANI Dialogues, today we are discussing several aspects of India's health sector. I have the privilege to open our first panel discussion on challenges for India's health sector. And I have a very distinguished panel, and I would like them to kindly come on stage. Dr. V.K. Paul, member Niti Aayog. A big round of applause, please, for our esteemed panelists. Dr. P.N. Ranjan, senior consultant neurology, Indraprastha Apollo Hospitals. And Mr. Amit Kumar Singh, CEO, Yatharth Hospital.
I'm sure this is going to be a very enriched discussion with a very experienced panel with us. Dr. Paul, I'd like to begin with you. The World Health Organization says that health is a fundamental right. If that is so, then everyone shall have access to health wherever he or she is, wherever they need, at whatever the time they choose to have. What do you think in this perspective are the challenges today for India's health sector? And foremost, my congratulations and compliments to ANI for hosting a dialogue on health, the health sector, health and well-being. Truly honored to be here. Well, health is essential for survival, for living a life which is fruitful, satisfying, and therefore, rightly so, health is viewed as a human right. In its own way, it's also enshrined in the Constitution of India and has been upheld by the highest court from time to time. To provision health, systematic efforts have to be made by all nations, including ours. And since independence, efforts have been made to provide health that's affordable, is as complete as possible, as high quality as possible. And in that journey, last 10 years have been a phenomenal success. I think this period has been a turning point, and I'll illustrate that when you give me time for that. But truly transformative changes in the health sector have taken place, building on what the nation had achieved that far. But clearly an acceleration has happened at the policy level, at the level of delivery, at the level of fighting a challenge like the pandemic that you referred to. And indeed, we are looking upon a health system and healthcare outcomes which befit a developed nation, I would guess, well before 2047, because I believe that health is an enabler of nation's prosperity. When nations become prosperous, health improves. That's also well known, generally speaking. But to be at the high table of nations, India's health system, health outcomes have to be of that high order. And let me just give one index of that. The life expectancy of India today is 71 years. Females a little more, let's say average 71. Just to let you know, when the Bohr Committee in 1946 gave the report, at that time the life expectancy was 27 years. 27. There were not enough old people, by the way, at that time. 27 years. So we moved from there to 71, but the Britain at that time was 58. So that was the differential. Today, the developed nations have a typical life expectancy of 85. So 71 vis-a-vis 85. That's a good number to remember. So one endeavor that all of us will do collectively, let's resolve that we will push this life expectancy from 71 to 85 or more. That's the challenge for the next 24, 25 years. And for that, survival has to improve. Prevention in health has to take place. Services have to be accessible. And we may have to make every possible effort to eliminate some diseases which are within our grasp. We can eliminate TB. We can eliminate malaria. We can eliminate lymphatic filariasis, measles, rubella, leprosy. These diseases are on the anvil of being eliminated. So this journey, moving from a transformative trajectory that the Honorable Prime Minister has given to this nation, it now can be truly exponential, and that's our endeavor. Thank you so much for putting it so back to you in a while. Let me go to Dr. Amit. Dr. Amit, India's health sector kinds of paints a contrasting picture between the Bharat and India that we see.
at one end, we have very high-end hospitals giving us all the type of healthcare we need today, world-class healthcare. On the other hand, we have ramshackle outposts in remote areas where even the basic needs are not completely met. How do you think this challenge can be bridged, and what are your thoughts on it? First of all, thank you for inviting me here. See, if you look at it, you are absolutely right that, the private players, the big healthcare, India is absolutely providing a very superlative care, and across world they recognize it, and that's what you see lots of patients from even a developed countries as well also traveling to India because of the cost advantage. But yes, the challenge is if you go to the remote place, it's like I come from a very small place of Jharkhand state, very small district town. There I see when I go there, so if you're a basic, it's like a lab coli or even a kidney stone. Probably people from my area, village, have to travel probably 150-200 kilometers. Nearest place is Ranchi or probably the Varanasi to get this. So I said there is a huge gap. But yes, if you see last 8, 9, 10 years, the private players earlier they were more focused on the metros. A-class cities, but now slowly they enter into the tier 2 kind of cities as well. But there is a huge gap, and only way to bridge this gap is that the government and the private sector has to work very closely. There are, private player has a certain constraint over going to those, the smaller district town kind of. So if the governments can, provide those kind of ecosystems to, bring that private sectors over there, it's like a infrastructure, land, the regional and local challenges, if there is thing, and have a very good tie-ups, probably this gap can be, narrower. See, government has got a very good setup. It's like they have a system of, district hospital, CHC, PHC kind of. But problem is that government cannot provide the complete delivery of the healthcare. So in terms of delivery, the government has to approach the private sectors or probably private. So work together. I think that's the only solution. In India, around 60-65% of healthcare being delivered by the private sectors. So the challenges which we face as in a private sector, we don't want to invest in either district places or in smaller places. So their government has a role to play, that providing the infrastructure, providing the other the ecosystem around it, and then having a tie-up with these bigger hospitals. So that there is a call, that's we are ready to provide our resources over there. We are ready to provide that kind of the channels where any difficult problems or surgeries can be bring it over there, or probably some of the basic treatments can be done over there. We'll send our doctors there, and then there's another role of telemedicine as well. So if you have a very good telemedicine center, the consultation with the doctor, like sitting over here, can be done even in remote places as well. So what I'm trying to say is that we have to work on an entire ecosystem, so where that's a private sector and government has to be engaged very closely, and I think these gaps can be bridged. I'll come to Dr. Ranjan, but before that, a quick word from Dr. Paul. What he said just that the government needs to come in and work with the private sector more closely to bridge this urban-rural divide. Would you like to say something on that? Thank you. There is only one sector in India now. It's one India, one health sector. Particularly after the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Ayushman Bharat, we are all interconnected now. And you're absolutely right that in partnership with the state governments, facilitated by the union government, there is a huge scope to increase the footprint of the private sector in tier 2, tier 3 cities. It's a given. We need to work in this direction. And in that, we should remember, the unmet need. Maybe I bring that part in where the size of private sector presence that we are looking forward to. Currently, the bed to population ratio is about 1 to 1.5, which means we have about 12 lakh or 13 lakh hospitals. About little more than half are in the public sector,
and about 6 lakh in the private sector. Give and take here a few numbers. Now, this is only 1 per 1,000. The developed nations, where we wish to be, have a ratio which is 3 times this. So can we do at least 2 times in the next 10 years? That's the point. 10 doubling, it would mean 1 per 1,000 more, which means 15 to 18 lakhs if I do all the corrections. So how do we work to have, 15 lakh more beds and largely significantly coming from the private sector? The government sector will do its own part, but together we have to reach that ratio. That means 15 to 18 lakh more beds need to be created. We definitely need partnership on this. And private sector must move fast in that direction. Get the FDI and get engagement with the state governments. State governments are the ones who offer the land and the other amenities. But then central government as a facilitator, we are there. We already have a scheme which has somehow not been picked up very well. And we are willing to do that correction, which is known as viability gap funding scheme. Please come forward. And if there are things to be tweaked in that VGF scheme, where not only the CAPEX is given, but also OPEX is given, it's a unique scheme, we would be happy to support. But tell us what more do you think is needed. And clearly, the government is committed to support that. I just want to add one more part. Where would the larger presence of the private sector be? Let's be clear. In the primary healthcare system, particularly rural heartland and even by and large urban, we believe the primary responsibility, but it doesn't mean exclusive, responsibility is that of the government. That's how it has worked anywhere that you see in the world. And the nation is committed to create a strong primary healthcare system, health and wellness centers, 164,000 of them, with telemedicine, with an additional worker put in place in a matter of 3 to 4 years, 150,000 of them. And you should have noticed it by now. Something that we should be very proud of. It has happened in a matter of 4 years. Now, we need the urban footprint of that. An engagement of augmenting, supporting services from the private sector, possible. But primarily, we believe that's the way it is evolving. But in the space of secondary, in the space of tertiary, you have a huge role to play. And that's what the paradigm of PMJ is all about. That as you move up this ladder, we have a partnership. I would urge that private sector clearly visualizes the fact that the Ayushman Bharat PMJ is the scheme, the flagship that's moving forward, accept it. You are only participating to the tune of 12,000 hospitals, which is really much more is desired on that. Using that paradigm, going forward in that kind of an arrangement where the services are purchased in the secondary and tertiary space from the private sector, is the paradigm on which you should build more and more and more hospitals of frugal kind, affordable, high quality. Services are impeccable, but the affordability has to be as a matter. Thank you so much. Now I'd like to come to Dr. Ranjan. Dr. Ranjan, if this synergy between the private sector and the public sector in healthcare has to increase, then we also need greater number of professionals, healthcare professionals. And we all know about the ratio of a doctor in terms of per 1,000 in India. That's abysmally low. How do you think this challenge can be addressed? Because if we take the case of nurses, for example, the number of nurses that were graduating from India 3 years back was much higher than it is now because of some reasons, some rules. How can we address this challenge, in your opinion? Good morning, everybody. It's really nice to be here, and especially nice sitting with Dr. Paul to talk about a very, very important topic which we have come to discuss here today, and how do we take it forwards. Basically, as Dr. Paul very rightly said, the private sector has a major role to play in the healthcare delivery system in our country. We are all aware that the private and public healthcare providers function as two entities working together towards health for all.
while public hospitals run under national and state hospital, the private sector has to work its operational viability in a very competitive market. Over 70% of healthcare services in India are provided by the private provider. To achieve the goal of universal health coverage, both healthcare providers have a key role to play to improve the health of our people. Government of India has been very nice and kind to increase public-private partnership models during COVID-19 response and also in the last two budgets. Nevertheless, there continues to be a perception that private hospitals are against public interest and operate only for profit and not transparent about the cost, which may not be essentially true. Or hospital treatment and packages are ununiformly priced. Therefore, it becomes very important for us to evaluate that what the private part have to do to provide excellent health care to our people at a cost which is affordable to our people. In our country, now to answer the question which I was asked specifically, in our country, where there is a gap between doctors, rural and urban, providers of health in rural and urban, there is a gap. There is a gap of the number of doctors who are there to look after. There is a gap in the healthcare provider. When I was going through this, I was shocked to learn for myself that in the rural areas, the major healthcare provider are the private players. May not be that much so in the urban population. So I think to go forward, to have a uniform healthcare system for the entire country, we need to have a system of an excellent government-private partnership to see that every individual in this country gets the best healthcare available anywhere in the world. Thank you for your opening remarks. I'll come to Dr. Amit. He rightly touched upon affordability of healthcare, which was to be my next question. Like he said, the healthcare cost in the private hospitals is not affordable for most of India, most of Bharat. How can we make it more affordable? What is the real challenge here? See, before I answer this, but just touch upon what Sir has said earlier. Yes, primary health care is mainly the government responsibility. And then another, when I said it that to develop the ecosystem for a private player, the one important component was the quality manpower, availability of quality manpower in those regions. This was what you touched upon. So that is another big challenge for a private player. I'll give you example. We started a hospital in a 3-tier cities 2 years back. The biggest challenge was to get the quality manpower. It was from doctor to a technician to the nursing, right? And I'll be honest with you, kind of the the remuneration which is being paid Delhi NCR, I have to pay a bit more to send a quality doctor to that particular place. So the important role comes is that yes, there is a scarcity of the quality manpower, and that is what you see in the last 2 budgets, which I can see that's government also having a thrust of creating more and more medical colleges and nursing colleges. I think that's the solution, probably, I would say. Particularly Northern India has more challenges of this. See, today's world, today's in India, if you see more than 65% of the 65% of medical colleges are either in a south or west, but north has a huge gap. And that is what I think very important for we would
want from government side to, open more and more medical colleges and, nursing colleges so that the quality manpower can be provided. And that is a big relief for a private player But and the it will big government might incentive say, for. Dr. Amit, the government might say that the private sector should come up more in the north. What do you think are the challenges? Why we don't have so many colleges Yeah, in I the think north? that there is a, I think that's a, the private, it is a government and private players has to sit together, those who are in a medical education to see, yeah, of course, there are a certain, roadblocks are there, which can be definitely, can be sorted out, to be very honest. But just, I said it, not only the government, but yes, private also. So medical education has to be focused, be it through the government or from the private players. So that is A. Second, answering your question, that's how to make it affordable. See, if you look at it, government has launched a fantastic scheme of PMJY. It's a very good scheme. And then the large number of participations, even from private players as well. Probably the metros is not that much, but if you go to the tier 2, tier 3 cities, the good hospitals, even the private hospitals are, taking those patients and providing a good quality of care. But yes, the challenges comes with the with the rate. See, private players has a certain expenditure, to be very honest, to provide a particular treatment, right? So let's say one side of an extreme is providing robotic surgeries. Another side of is even we don't have somebody who can do the open surgery in a tier 3 or 4 kind of cities. So the gap is the quality of it. So one is that what you are the essentials services. So I think the PMJY or there is a ECHS, CHS, whatever the schemes government has, I think has to be a bit of fine tuning of it so that should be more welcoming for a private player to take it and provide those treatment. That's the only I would say the solution is. Plus digital media also has to play a big role, to be very honest. Last 3-4 years, particularly post COVID, I think that's entire thought process, entire ecosystem has changed. The digitalizations in healthcare has grown like anything. That is also probably has a role to save some cost and providing the very fast and very healthcare to be accessible, the quality healthcare to be accessible for even the district places or even a kind of the villages, I would say. Dr. Ranjan, in India, our focus has been more on curative care in health rather than preventive care. How can we shift our focus towards preventive healthcare measures like health education, more of vaccination, early detection? A very relevant thing that, yeah, we talked about curative health, but I think preventive health, prevention of a disease, and especially when we talk about prevention of non-communicable diseases, we've done very well as far as communicable diseases are concerned. Now, the preventive effect of non-communicable disease, which are going to be a problem and already getting a problem in the developing world, like diabetes, hypertension, stroke. So I think we have to go a long way to have preventive health checkups for. We have to go a long way for increasing the awareness of non-communicable diseases for preventive purposes to increase the health of our individual. Prevention should be the first line to make our people more healthy and save them from. Dr. Paul, your thoughts on the same? Thank you. I want to pick on one point that sir you made with regard to the PMJ, because that should be clarified. When you are going to use public money that belongs to the people, sort of that obviously comes from the tax and belongs to people, it has to be spent rationally. When we are fixing, there is a process of fixing the package rates of services, and that's a partnership. We sit down, we do it, and we do it to the best of our ability, keeping in mind that the money belongs to the people and should be spent properly. That's the principle. Having said that, in the initial phases, I had directly handled this package rate, whatever provisionally we could do, and now we are refining it much more systematic, even more evidence-based. But the problem first
when you find procedure X, let's say cesarean delivery, and we're looking at set of hospitals that are potentially to be enlisted by the PM system. There's one private hospital which offers us 35,000, another one 80,000, another one 120, 5-day package, another one 2 lakh. Now, which number should PMJ pick up? There's a variation. That means there has to be a different way of handling it. We cannot, you cannot satisfy, because private sector has been built with a certain paradigm so far. We are retrofitting it in a way that now let's change the game and do like this, because it is working, being serviced by the money that belongs to people. So where do you put the finger? Now that has been a problem. But we have now found scientific ways of doing it. We do health economic analysis. We do health technology assessment in the DHR, the Department of Health Research, and we are refining the model. My request to the private sector is, A, please consider this to be a partnership. There are forums, there are people, we are accessible, we sit together, and let's incrementally come to a point where it will be accepted against rules, with rules, But the other part I want you to remember is that when you build hospitals now onwards, keep in mind the PMJ paradigm. If you do away with the frills, people would expect efficient services, high quality services, NABH enabled services. They can do less with the fittings and other things. Look at some of these ophthalmology models that have come up in Madurai and other places. They do first class care. Our President of India went and got eye treatment done in a very frugal system. So I think the time has come to build those hospitals which do justice to the spending, public spending, and yet give high quality service. This is the way forward. Then only those hospitals will come up where servicing people will become easy and streamlined and mainstream in partnership. Sir, about your point about prevention. India's public health effort have been predominantly led by prevention, if you go back. Where was the money being spent in the earliest times? On malaria, smallpox. Then where was the money being spent? For maternal health care, oral rehydration, diarrheal disease. We were making some effort to strengthen the district hospitals and provide referral services. So I think in a very reasonable measure, prevention was never forgotten. Communicable diseases were being tackled. The trachomas have disappeared. The yaws has disappeared. Smallpox has disappeared. Polio has disappeared. So all that was primary health care, and there was no doubt. National health policy, we are committed to spend 62% or so money on primary health care, and that's why I said primary health care is the business of the government. So I have no doubt that the primary health care has always, we only built one AIMS. Now only we are building 22. If the tertiary care was a priority, we would have had one every 10 years. It didn't happen. So that's the journey, and under the leadership of the Prime Minister, in 10 years now, a clear balance and a clear higher priority to primary care has been imparted. So we were at a stage where we had sub-centered all this, but the primary care was selective. So communicable diseases that I refer to, maternal health, child health, reproductive health is what we were focusing. We were not focusing on hypertension and diabetes, and even optimally at the primary care level, let's say mental health, care of the elderly. No. That's why in 2017, the policy clearly laid out emphasis on primary care, a task force constituted, a vision for comprehensive primary health care was articulated. Translating that vision, now the nation, you all have created a strong primary health care system through these health and wellness centers. How is it different? A new provider has been imparted. Drugs. A sub-center health and wellness center has 105 drugs and 172 drugs if it's a primary health care. 14 diagnostics here and some 70 diagnostics here, or 44 diagnostics in the MO. So the and sickle cell disease diagnostic and treatments and so on, and wherever geographically you need those things.
So the short and brief point I want to make very humbly is that the nation has built today, in these 4 years in particular, 18 to 22, having crafted the policy previously, a strong primary healthcare system. All of them are telemedicine enabled today. All have a new provider, the mid-level provider called community health officer. Now is the opportunity to go big on primary health. We also have a strong connect with Ayush. Yoga is an integral part of the primary healthcare system, that the health and wellness centers, Ayushman Arogya Mandirs as we call them. So all these mandirs have yoga. All these mandirs have a emphasis on primary care, and 12,000 are Ayush health and wellness centers by themselves. Having said that, last point, what is it that we now should do? We have started focusing on non-communicable disease, screening for hypertension, then treatment. Screen, treat, follow up, and control hypertension. Have we built this system optimally? Not yet. Screening happening very well. Treatment pathways need to be created, moving very well. We need your help to facilitate that the people, once detected, are on treatment, and ultimately, population level, more people have controlled blood pressure than today. So today we have 30% people with uncontrolled blood pressure. In 2 years' time, it should be 5%. That's the goal. Diabetes screening is now almost a norm. Treatment is the challenge, and treatment is being provided, but it should be optimized, it should be lifelong, it should go to the second drugs and so on. Cancer screening, oral, we are doing well. Cancer cervix screening and breast cancer screening, the 3 focus cancers, we need to strengthen. Help us to create these models. Help us to give technology which can do breast screening easily at the earliest possible. Otherwise, we are doing it with manual system. Eye care has to be planted, oral. All these 6 remaining packages, 7 remaining packages have to be put on. In particular, very keen and a priority to put mental health, primary mental health layer on the system. Some trainings have happened. We're going to push it further. My request to the academia, private sector, all of you NGOs is that help us do this well, because this is new to India. We need demonstration models. We need functional models so that we can continuously refine and meet the objectives of comprehensive primary health. I didn't mention care of the elderly, which is another package, and palliation. So we have the framework. We are moving strongly. But as we build in these 5 years in particular, we need your help to streamline and to create efficiencies. But we are close to people. Abha IDs will be given at that level. This sub-center, one mandir is responsible only for about 6,000 to 8,000 people, 1,200 families. It's a great way forward. We have to do the same thing with speed in the urban areas. But a strong, resilient, future-ready primary healthcare system is being built right now across this nation. Please join hands to work together to deliver on that and make a paradigm shift. The obesity pandemic, the diabetes pandemic, other things that that are emerging on the scene, we need your help, and primary care has to be the foundation of the way we approach, and we believe strong participation of the Ayush principles will go a long way in this regard. Thank you so much for your passionate appeal, Dr. Paul. And as you rightly said, the government cannot do it alone. The last question would go to Dr. Ranjan. Dr. Ranjan, how much a role health literacy plays here? We have schemes, we have the intent, we have the framework, but the knowledge about disease prevention, how much a hindrance this is amongst people? I can very confidently give my own statistics and my own experience about the awareness of people, because I've done personal work on that, of awareness of people as far as stroke is concerned. So you'll see what level of information, what level of literacy, what level of information matters for you to know your disease better. Now, very often, a patient who has a cerebral stroke, a brain stroke, lands up into a cardiac hospital, and I shouldn't be saying, unfortunately, he even has an angiography,
And then the neurologist calls him that he's had a cerebral stroke. Now, we successfully interviewed about 10,000 people about the information about a disease as far as stroke was concerned. And to my surprise, educated, highly educated, middle class, leaving alone the rural population, still felt that the stroke or a brain stroke comes from the heart. You know, it was astonishing to see the awareness of diseases which are prevalent in our country is so poor. And how would the awareness increase? Obviously, literacy, information, going to places, and this is what I've done personally, going to place, going from district to district, close to Delhi, to give the information about what this disease is and what you need to do. So I think the private sector, which I work for, I think has a major role to play. And I think the private sector has played its role to disseminate the information about the various diseases amongst the people. I have a lot of questions, but we are running out of time. Thank you so much for this. Yes. Primary care, one more aspect, a good note to end on. The underlying determinants of health have also been addressed in a systematic manner. I'm referring to making India Swachh with 11 crore toilets. Rural India today is Swachh, ODF, open defecation free. This will have and has had impact on diseases. Every second, a new water tap water supply in rural homes is being imparted. 75+% of our rural homes today have tap water supply, starting from only 17%. And ultimately, we will have 60 crore rural homes having tap water in a year or less than a year. Ujjwala Yojana provides reduction in indoor pollution with 10 crore connections, the gas connections that have been provided. So we should be mindful of the fact that there is another part of government's huge effort through which health would improve in our nation. Thank you so much. Last 2 or 3 lines you were wanting to say. We're really short of time. See, as it the initial statement, see, one is that we talked about affordability, but I would say the major challenges is about the accessibility of the quality healthcare. And that is what, if you see, now the last 4-5 years, things has really changed. There are private players who are entered into it, and there are various states governments had provided. It's like they've given a PHC, CSC. It's well connected with the good hospitals. We have a command center at our own hospital, right, where the super specialists are sitting over there, and any patients walk into the PHC or a CHC can be through teleconsulting, and not only the teleconsulting. Consulting is a one part of it. But yes, then there is a lab services, and there is a radiology. Dr. Mahajan sitting over here. And then he would be agree with me that today's world, that pathology, radiology available on the wheel, and then, sitting at a remote place of district town, you will get the best of the best consultation, best of best teleradiology, the treatment, the reports can be provided. And we have the drones delivering the itself. medicines in the Far East and so many remote areas. So I think technology plays a big role, and that is the topic of our next discussion going ahead. Thank you so much, my distinguished panel, for sharing our valuable time with us. I'd like to request Mr. Sanjeev Prakash, Ms. Smita Prakash, to kindly come on the stage and honor our esteemed panelists. Mr. Sanjeev ji is the managing editor and CEO of ANI. Dr. Paul. Dr. Ranjan.
Dr. Amit. Thank you so much once again for sharing your valuable time with us. Thank you. Life without technology is unthinkable today. We live in an era where technology and being connected is as important as having food, water, and our basic needs met. And that is the topic of our next discussion, the role of technology, the role of artificial intelligence, and digital health in today's times. And we again have a very esteemed panel for this to come with us and discuss this. I'd like to invite Shalini, health editor from ANI, to join me for this discussion and invite our panelists. Shalini has been covering health for a very long time at ANI, and she's well versed with this sector. Shalini, you put together a wonderful panel, I would say. Yes, definitely. So today we are going to discuss about artificial intelligence simulation of human processes by machines. So this is the current topic and everyone wants to discuss this topic. So we have on our panel Dr. M. Srinivas, who is the director of AIIMS Delhi. A big round of applause for Dr. Srinivas, please. Please have a seat, sir. Please have a seat, sir. Thank you so much, sir. Then we have Dr. Harsh Mahajan, who is a senior radiologist, founder and director of Mahajan Imaging. Welcome, sir. We have Ms. Malika Bajaj, who is the director of ballistic learning and former WHO CRO digital lead. Sir, as we know, artificial intelligence and especially AIIMS is doing a lot of work in this regard. So my first question goes to Dr. Srinivas, and it is that basically how artificial intelligence is useful in healthcare. Good morning to everybody. Thank you very much. AIIMS has been always a leader, and we have taken up that leadership thing with us, not only in all the domains. If you look into the AIIMS, we are in the domains of the patient care. We are number one in the teaching and learning. We are number one in the research. And of course, on the administration and added on the good governance and transparency, which we have been focusing on. Artificial intelligence, we heard in the previous session, that there's a dearth of the hospitals, people, the divide between the urban and the rural services and everything. That's where the technology comes into the aid, that we bridge that gap and then enhance our services. Well, AIIMS is into the artificial intelligence also. If you look into the projects which we are going through, for example, in the breast cancer, the research project is going on with us where we have a triage system, because we don't want to wait for large number of things to be done. We are wherein they will go through the mammography, and then the mammography will tell us that, well, this is somewhere we need to look into that. This where you have to be very cautious to say that this is likely to be malignant or something like that. That's an area. The second thing is in oral cancers. The previous session we heard that the people are not able to reach to the rural areas and the smaller places and all. Today we have a technology wherein we can look into the things and say that the lesion is malignant or benign. So that kind of technology is possible. And the moment it's flagged as benign or doubtful, then we can reach to them and then
have that kind of limited manpower to give the services to the people. Because in the cancer, what is important is early detection. That makes a lot of difference between successful treatment and a cost-effective treatment than going into the later stages where the morbidity and mortality is going to be very high. And similarly, we have in ophthalmology also. Today you won't get a great specialist in retina in every place. And today the technology is there where you can look into the eyes and say that somebody who is remotely monitoring that and or take the images and say that, well, this is a retinopathy which is going to go to blindness, flag them, bring them, do the triage and then filter those people who need the specialist care and then bring him to the places where a particular retina surgery or management can be done so that the blindness can be prevented. So a lot of areas the AIIMS is working on, and we are very happy that we are partnering with many institutions also, whether it is IIT Delhi or technology institutions, because today the medicine and tech engineering should not be separated. We were in the silos for a long time, and today we have broken those silos, especially at AIIMS Delhi. We are partnering with the technology institutions so that more and more the technology is put into the patient services, more and more technology is put into the artificial intelligence and the triage system wherein we will be part and parcel of everything, whether it's the primary prevention of putting up the things or the tertiary care treatment for the people, because we have huge load and the load has to be filtered. You can't have a common disease come to the AIIMS and then clog the systems. So we want those filters to be happening with the technology so that the patients can come to us and we give the complex and complicated disease systems, treatments and surgical options to those patients who really need the patient care. AI is being used in cancer treatment by AIIMS recently. Yes, we are part and parcel of that. I think some of our colleagues are here. Dr. Kritika is there, part and parcel of the AI. She leads the team on the AI, role of the AI with various departments. And we have imaging system where it looks into that and says that whether it is likely to be benign or likely to be malignant, so that we can screen large number of patients at a rural settings or remotely and then take those things and flag them and bring them to the place where we can offer the early treatment and pick up those cancers early. Technology is said to be a great equalizer. We've seen that in COVID. Malika, I want to come to you. Though technology is a great equalizer, but we have a digital divide as well, like the divide we have between urban and rural India. Digital literacy plays a big role. So what do you think can be done here in that respect? Thank you. Firstly, I'd like to thank ANI. I feel so safe with the hands that we're in with Smita ji and her team. I think ANI has also proven to all of us that tech is not a divide. It's actually an oxymoron when we speak that, because she's in my room every day in my office. If I need help, I'm like, she's connected to me. I've just met her for the first time. But, I think it's important to realize that tech and humans is a different, yes. But different doesn't have to be difficult. And I genuinely, certainly believe that I'm not a doctor, so I'm coming from a digital expertise perspective. Having come out of the pandemic, courtesy the leadership of our Prime Minister, the very, very capable hands of Honorable Health Minister who's joined us, and our doctors. I've had the honor of working alongside Sir's new team and everybody else. I believe that my generation onwards, it becomes our moral responsibility to recognize that tech, learning how to deal with it, what to do with it is very, very important. And why I think that's important is because India is being used as a mathematical skill set to understand the future of the new world we're in. I've also made a couple of uptakes on from the previous panel. Dr. Paul has been here, and I think from a digital healthcare perspective and also from a healthcare perspective, my takeaway of having been India's oldest e-learning solutions company, we've been around for 20 years, we've served over 200 clients across 30 countries, and India's waking up to us now, and we're very grateful for it. And we work in Tier 3 and bridge the last mile, and we train nurses and ASHA workers, and we're digitally, training them to help us grow the vision that Ayushman Bharat has set. My three key takeaways are, and I think the doctors here will also agree, and this is not just for your physical health, this is for your digital health as well. We are very hard to control when we're healthy. We're very hard to manipulate when we have clarity. And we're very, very hard to influence when we have sovereignty. And when I say healthy for digital media, digital technology, AI,
AI, of course, helps us extremely by differentiating and shafting intelligence that is artificial to begin with. So it really helps on a digital space. But where is your content being consumed from? Is it verified? Is it a complete, honest truth? Can you learn more about your content and the stuff you're consuming? That allows you to be healthy. What is the price you're paying for it? At this particular point, 1 GB of data in India comes at 14 rupees if I'm being very, very outstretched on my margin. It's the lowest in the world, so it's not a big price to pay. Secondly, when we come to your clarity, at Ballistic Learning, leading this team, I am confident of the work that we've delivered. We are not going to be restricted to creating content in English language. Digital transformation will be in the languages our expertise comes in. We have made the ANC app, which we've worked with the ASHA workers down south with teams at, the world's best doctors is sitting right next to me, so I'm a little nervous. But through his expertise, we have gone round to the last mile, and the doctors tell us what needs to be done. The ASHA workers tell us how they want it to be done. And we provide that solution. That is our expertise from the digital media angle. The language they speak, is it Divyang friendly? Does they have cultural references? Do they address the concerns of urban and rural issues? Because urban India and rural India healthcare problems are very difficult. So we need to understand that. And lastly, I believe to maintain the sovereignty, I think it becomes really important because everything we are designing, and I'm speaking for myself and my team, we create scalable, secure, sustainable solutions. Of course, we use open source. But the only request we have is we need to start looking inwards for solutions, because when we look outside for international organizations to come and support us, we lose our sovereignty. We need to custom create our tech stack, starting from the UI, right down to our zero tolerance service architecture, because that is the only way India will create national capacity building programs, which are not only going to be coming from a space of ego. We're coming from a space of knowledge of what the audience wants. And at this point, with the vision my leader, Modi ji has, and our doctors who have worked very hard to give us a second inning, it is important to realize this new world we're moving into of one world, one earth, one family Bharat is becoming, that we take our security at prime importance, and whatever we code, we leave no one behind. And when I say no one behind, we become leaders to how to make technology affordable, accessible, and anywhere globally. And I think with this kind of expertise with healthcare, if I have the support from the doctors, from the government, to recognize that this language is my main language, coding is my main language, and I'm probably the last crop of this generation that is between the old and the new, because the generation after me doesn't even understand why we're doing anything offline. Why can't I meet my doctor online? Why can't the surgery be virtual? So I think that is the divide that we're dealing with, and we're doing our best, and I can confirm that our doctors, our government, just for the access divide, there is one little debate that pops up often between access and capacity. My only request is the government is doing everything to provide access. Before the pandemic was even a big deal, Modi ji had already declared and announced and given, that connection between Chennai and Andamans, the optic fiber 2,000 kilometers was laid already. So his vision is already the future. Now, the capacity lies in the people wanting to access or not accessing. And while I was with the international organization, I remember the small relevant example of we have access to masks. The doctors kept telling us, please mask up. The government said, please mask up. They put masks in our homes. But there was very small majority, but we become a big number. We refuse to wear our masks because we don't like Modi ji. We don't trust this government. They lost their people. They lost health. Let's steer the discussion on the other things that are waiting to be addressed. Shalini, lots more to discuss. Dr. Mahajan, I would like to ask, as there is always a requirement in upgradation of diagnostics. So I would like to know, how AI is going to be useful in diagnostics. Thank you very much. It's an honor to be here. Now, before speaking just about diagnostics, I think AI and technology
is going to be transformative. And the only way that we can provide quality health care to the masses of the country is going to be through the use of technology. Dr. Paul is sitting here, and in the last 10 years, we've seen that the government has been very, very proactive, not only in trying to create more doctors, not only in trying to create more specialists, but also the vision that it is digital infrastructure that is ultimately going to provide access to the last mile. Towards that end, the Ayushman Bharat Digital Health Yojana, I think that, along with the fact that 160,000 health and wellness centers, then the emphasis on converting district hospitals into actually live, active hospitals with a medical college attached to most of them. The idea to have centers of excellence like AIIMS, from one now to nearly 22 of them. Now, what was the basis behind this thinking, and how are we going to achieve quality healthcare down the line at, again, affordable prices? That is where technology, that is where artificial intelligence algorithms, that is where telemedicine, maybe, again, riding piggyback on artificial intelligence, is going to play a role. It will still take many years, despite the thrust to increase number of specialists, number of doctors. It's going to take 20, 25 years for us to reach that target. So also the emphasis that all of healthcare is not going to happen in hospitals. It would be out of hospitals, maybe in the patient's home, maybe in the health and wellness clinics. The focus on preventive health, predictive health, and precision health, that is where artificial intelligence is going to play a role. At our own Mahajan Imaging and Labs, starting in 2016, we delved into artificial intelligence. In fact, Kritika, who now leads this effort at All India Institute, was with us for some time. We were sad to lose her. No. So it may surprise and would specially delight most of you sitting here that the first paper on artificial intelligence in the Lancet, written in 1918, came from India. Work done in India, written in India. It was from our group along with our collaborators, Cure.ai, which is in Mumbai. And so India actually started early. These 2 people, 3 people startups, the IITs, whether it be in Delhi or in Bombay or in Chennai, the smaller, engineering colleges, these hospitals, all associating. So it wasn't only All India Institute or large hospitals which were working with these entities. It was even the smaller 2-3 people startups which were working, and again helped by schemes of the government which were willing to come in and fund these startups. And there are many of these vibrant ones. Yeah, talking of the startups, Dr. Mahajan, there are more than 5,000 startups now in India in healthcare, and this number is set to grow further. I'd like to come to Dr. Dheeraj. Dr. Dheeraj, like Dr. Mahajan said, technology is going to make it more affordable for the masses. Do you agree with that? What's your take? With all due respect to Dr. Mahajan, I've been your patient n number of times, but there are no laws on artificial intelligence. They need to be regulated, and there is an ethics. I may just interject. The ICMR actually wrote a document a few months ago. Okay. And so there are laws, or at least direction to it in this country. We were amongst the leaders in the world. So ethics and compliance is an issue, and data breach is also an issue. But yes, there are radio markers. Artificial intelligence helps in radio markers for cancer and various things like that.
Now, as far as technology is concerned, 5G is a game changer. Under Prime Minister Modi ji, 5G is we are going ahead in leaps and bounds, literally. And there is a virtual board, tumor board in Chennai. I was talking to a Tata person yesterday. Cancer and breast cancer, oral cancer, breast cancer is predominant in one state in the northeast of India. Forget the name. They are sending all these reports into Chennai and helping with technology. So there is something called hub and spoke. Now, for example, hub and spoke is like AIMS, is the great office there, and you have somebody working in Bihar for that matter. So hub and spoke with 5G will revolutionize telemedicine in a way. And all this traditional medicine also, we are talking about Jamnagar. We are hearing about Jamnagar because of certain other reasons. Prime Minister Modi has inaugurated a traditional medicine outlet in Jamnagar. Now that haldi, garlic, manakka is on the table, cow's milk has its own benefits. Even the children are now realizing it. Dadi and Nani were talking about it. They know about it now. So this is what Prime Minister Modi's vision is. You want to ask? My next question to Dr. Srinivas. Sir, I just wanted to know that AIMS is working with IIT Delhi on various projects. So can you brief about those projects? Well, there are many projects which are happening, and at the moment we have a couple of 5 or 6 of them. Basically, we are working on the areas of breast cancer, as it has been said that the early diagnosis can be done. And with respect to the mammography, again, a domain of the radiologist and the artificial intelligence. And then we are also working on picking up the eye diseases, the retinopathy with respect to the diabetic retinopathy and other things where we can offer them an early treatment and prevent the blindness. And of course, as the discussion was going on with respect to the oral cancers, because again, this is one of the commonest cancers for us. A couple of other things are happening, and then we are going in a big way for further and collaborating with many institutions. It's not just the IIT alone, but many other institutions are with us. And we will be going ahead to connect to the people more and more, and then look into the systems so that we can have that kind of service beyond the boundaries of AIMS. Sir, there is a discussion about Neuralink chip. So can we say that, it has, as artificial intelligence has pros and cons? So is it going to replace the doctors as well? Well, artificial intelligence always is going to be artificial, There is natural. Yes, absolutely. I think that's the underline. Who creates at the end of the day? It is we create that, They cannot be, they will always be the slave for us, The masters will be we only. We will remain the masters. And only thing is, it will be complement and a supplement, You can do in a larger scale, you can do a triaging system, you can do a filtering system, you can reach out to the more masses. You will have the comfort of dealing with wherever you are, whether in the institutions like AIMS or the other way around, at home and then get the treatment, It will enhance the comfort. It will enhance your the spectrum. It will enhance your numbers. It will enhance your volume. We can reach out to the more and more people and then catch them young and catch them early and then help them out so that the outcomes will be better. And we remain the masters at the end. Dr. Mahajan, I want to come to you. He just spoke about data privacy. We all know healthcare contains some sensitive data. Do we have the robust frameworks, the regulatory frameworks that we need to take care of this data privacy? That's a very good question. But before answering that, I will talk about AI replacing doctors. We do have to mold ourselves to technology, accept what may be useful for us. So on that score, I would say doctors using AI may replace doctors who are reluctant to use AI or adopt AI. So that certainly could happen in the future. Now about data privacy, I think it's very important. We've seen malware attacks on several institutions in the country, not only here, but across the globe. They get in, then they want money. And so it's very, very important. I think the European Commission has done some work on data privacy, especially as related to the use of artificial intelligence. And the whole world is very, very aware. Similarly, in India, I think the government has been very proactive.
And we do need to create firewalls so that data is not stolen. Data is also that it is not misused without consent. So we would have to have very robust systems of consent, especially in the healthcare field, from patients, informed consent, where, they can tell you. Of course, we need that data in this country especially to develop algorithms which would be used within us for our own benefit. So it should not be that there should be a blanket ban on use of data, but certainly it has to be de-identified. That is, the most basic of needs. Ultimately, India will have to find solutions for its problems in India. And for that, we need this data. And we also need to realize, it's the cliched word is data is the new oil, but certainly it is. And we need to be mindful of the fact that we need to store our data well. Right now, we say 1.4 billion population, and so we have huge amount of data. But when you actually go searching for it, and I was part of this team at All India Institute trying to develop AI algorithms for oncology, and you would realize across the country, it's absolutely unstructured data. The report is lying somewhere, the images are somewhere, the written, the clinical data is all in writing, who is going to actually look at it and digitize it. So even if today we decide that we are going to store our data in robust manner, can systems talk to each other? Can systems in different hospitals be similar? That is where I think the ABDM is going to be very, very good, where the government gives the framework, the basic framework, and the flesh and blood is brought in by the private and the public sector to create a full ecosystem. Well said, Dr. Mahajan. Malika, would you like to add to that? No, I think I completely agree with sir, and I think it brings me back to the point where I was saying we can create secure, scalable, sustainable solutions with external help. But that's exactly my request to the doctors and the government taking those digital decisions at this point, that our sovereignty is critical, because it's not just the solution we're creating for ourselves. We have data, the world is looking at us, and even if we deploy any kind of open source or any proprietary network, the tech stack needs to be customized to keep UI to UX completely in sovereign control of every brand going forward. I have a question for Dr. Srinivas and Dr. Mahajan. Will it lead to an overkill, artificial intelligence in medicine? Will it lead to an overtreatment, overkill, false negative, false positive? I'll Are we just looking into answer. that? Before that, I'll talk about the cyber security and everything. Wait for 6 months. The AIMS is always a leader. So we are giving almost 400 plus crores of system, which has got a zero tolerance. And this will be the model, and probably this will be the model for the rest of the AIMS, and maybe we will become a role model for the entire world. Oh. So I can confirm when sir says it, the world's best doctors will be leading the world's best digital healthcare going forward. I am very confident of that. So, Dr. Vora, to your point, whether AI will lead to overkill, overdiagnosis, wrong diagnosis, today if we see, there are 700 plus AI algorithms that have got US FDA approval, out of which the majority are for radiology, followed by cardiology, some little bit ophthalmology, pathology. Now, there is no doubt that we cannot be just dependent on artificial intelligence. Our own intelligence will have to be used. We will have to harness the good points that we can get. One way probably it will be used is as an assistant to human beings, be it in healthcare, be it in other fields, where if we can actually improve the productivity, say, of a doctor. Today, as a radiologist, I'm able to write 25 MRI reports. Is it possible that using AI, that number could be 100? Is it possible it could be 500? Today, a doctor on telemedicine call
is able to see one patient in 15 minutes. Can it be brought down to 3 minutes using AI? Because that's able to analyze and give you something ready-made. These are all questions which are as yet questions. Only time will give us the answers. But if we can improve productivity, there was a time a pathologist for blood test would look at 50 samples and give 50 reports. Today, one pathologist signs out 5,000 reports, and we know that the quality is excellent, that these are accurate reports. So the future going forward is going to be very exciting. Of course, we will have to navigate the highs and lows of the technology and actually mold it to our needs and not be molded by it. Dr. Srinivas, In addition to that, the machines also learn. You know, that's what is machine learning. It cannot be overkill. Over a period of time, there will be course corrections, and then we will correct the machines to learn better. Just taking it forward, it's a very exciting field. You know, US FDA approval given for an algorithm, there's thought that maybe once a year, twice a year, as, you know, we talk of drift. Is it getting better? Is it getting worse? So that also will need to be checked for the same AI algorithm. An AI algorithm which works very well in All India Institute may not work as well in Safdarjung Hospital, just across the road. So, and that's where actually a startup came out of Mahajan Imaging called Kapil.ai, which is for validation, testing, fine-tuning of AI algorithms and also of deployment. This happens to be the largest AI marketplace in the world. More than 120 AI algorithms available on it, again, developed within the country for the world. That's wonderful. Last question to you, Dr. Srinivas. Can AI be useful in drug discovery? We have so many diseases that are yet to find a solution, a cure. The living example is we have seen during the COVID. Millions of the drugs were tested in the laboratories and various architectures were looked into and the drug discovery was done. And we could do that. If all that could happen in a short period of time, unlike the years, it takes years for us to go through the way we used to go for the drug discovery. But today it is possible, you know, the 3D and the various simulations which are there and all that is happening. And it's a long way to go. You know, we will have whatever the pandemic comes or the new pandemic comes or the new disease comes, wherever we need. Today we are in a position to come out in a very fast mode, you know, a few weeks, a few months, where thousands and thousands, maybe millions of drugs are being tested, efficacy is being seen in the 3D simulations. Can I just interject? We are just running Please go ahead. Yeah. Please, no. So it takes roughly about $1 billion and 10 years for a molecule to come to the market. Using newer technologies, AI, if we were even able to shorten that time by a year or 2 years, look at the amount of money that would be saved and how quickly a drug could come to market. So AI will definitely AI can be play a really role. revolutionary, and going ahead, it's going to be an exciting can I time just for the quickly healthcare add? sector. I We're just really wanted to add to running this- short of time. Yes, I'll take a microsecond, but I have to put this thought out because we're all putting up, you know, the future ahead. But as a digital content creator, as a digital academic, my dream is, starting from this room, everything that is shared here, that we can document this experience, this wealth of knowledge in our current doctors, and then allow AI to grow on it for our future generations, because we cannot afford to lose these minds, this exposure, this experience. And I'm so hoping that someone can hear this and we can actually build on navigating this wealth online and then allowing AI to make us even better going forward. Thank you so much. sir. Well put. I think something needs to be done is teaching and learning. You know, it's not just the therapeutics, you know, teaching and learning, because we are, AIIMS New Delhi is the first in the country in the government setup to have a robotic simulation center where we will learn the surgeries. So this is also important. It's not just the therapeutics, but also the teaching and training. Thank you so much. It's so been much, an honor and privilege to be navigating this discussion. And I'd like to request Sanjeev ji again to please kindly come on stage and honor our distinguished panelists.
Okay, last sentence to Dr. Dheeraj. This is for the youngsters. Yes. That health is wealth, but please do not get obsessed with health. You got to live your life also. Well said, well said. Thank you, sir. Thank you, Shalini. Thank you, all the panelists, once again, for sharing your time with us. It has been a very enriching experience for me, I'm sure for all of us out here, to listen to these wonderful interactions, engagements that are increasing our knowledge. And as Dr. Dheeraj rightly said at the end, we shall not be obsessed with health. We are now moving into a very interesting section of the ANI Dialogues, Navigating India's Health Sector. We have a few minutes to move into our next session at the ANI Dialogues. We'd like to draw your attention to our esteemed partners here, our sponsors who have generously, wholeheartedly stood with us, Yatharth Super Speciality Hospitals, Indraprastha Apollo Hospitals, the Education Group of ITS, MCure, Success Through Innovation, and CCRYN. हाँ हटवा दीजिए अभी के लिए सो अब बात होगी योग की, आयुर्वेद की और वैकल्पिक चिकित्सा, जिसे हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहते हैं, और ये हमारे हेल्थ के लिए आज बहुत ही जरूरी हो गए हैं। इस सेशन की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर तनुजा नेसरी, जो कि डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की। उनका शानदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी अपने विचार हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर तनुजा नेसरी। तनुजा जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर हैं और एक बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर है। मैम प्लीज Namaskar. At the outset, I am really thankful to ANI, entire team, Naveen ji, Prakash ji, and all my friends I know, to whom I know very well, Shalini and everyone. Ministry of Ayush, Health Ministry. At the outset, I am really thankful to Secretary Ministry of Ayush for giving me this opportunity. That today I am representing All India Institute of Ayurveda, which is the same considered as a aims for Ayurveda, and also the secretary
representation as Ministry of Ayush. So I'd like to inform and debrief about all the transformative initiatives what Ministry of Ayush has done during this government 2014 से 24 तक 10 साल जो पूरा entire sector transform हुआ है, where we can say that it is the tradition of Ayurveda and Ayush which is supported with the technology and the Ayush which has made this system as a classical yet contemporary and the most relevant for today's time. Someone said in the first session about 5G and the use of technology and AI, ML, everything. But what I must say that our Ayush system, our tradition is a 5P medicine, and that I think that would lead the entire world when we celebrated G20 as a Vasudhaiva Kutumbakam and One Health. But I'm sure that if we really add the technology, science, research and innovation to our traditional medicine, we will lead the world in next few years, because the world is talking about 5P medicine. As along with 5G, we are moving towards 5P medicine, and that is preventive, promotive, predictive, and participation and personalized medicine. Put together everything, Ayurveda is a personalized medicine. It is a predictive medicine. जैसे हमारी प्रकृति है, what will happen, and that really promotion and prevention is the strength of this system. हम कहते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम. तो हमारा जो अगर personalized हर किसी के constitution, if we know our constitutions and if we really customize diet, lifestyle, thought process, it is a preventive, it is a personalized and promotive health promotion होता है. एंड अगर हमने नाड़ी देख के पहले जो हमारी नब्स देखते थे, नस देखते थे, उसको देख के मिजाज देख के क्या आगे होने वाला, इट्स अ प्रिडिक्टिव मेडिसिन. और प्रिडिक्शन होगा, प्रिवेंशन होगा, हमने बताया. तो कोविड में हम ये कह सकते थे किसको कॉम्प्लिकेशन होगा, किसको नहीं होगा, बट फॉर दैट कोविड ने हमें ये सिखाया कि हेल्थ इज नॉट द थिंग विच कैन बी बॉट फ्रॉम फार्मेसी शॉप. कोई एक पिल नहीं है कि जो हमारी हेल्थ बनाए रखती है. कोविड में वही लोग टिके जिन्होंने डाइट, लाइफस्टाइल, इम्यूनोमॉड्यूलेशन बहुत अच्छा स्ट्रांग था, वही लोग टिके, उन्हीं को कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ. सो दिस इज नथिंग बट आवर ट्रेडिशनल मेडिसिन. आयुष यही सिखाता है. दादी माँ, नानी माँ के नुस्खे का जो साइंस है दैट इज आयुष, दैट इज आयुर्वेद, और उसका साइंस टेक्नोलॉजी हमने की, तो उसी को ही हम एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने ला सकते हैं. इसके लिए हर किसी का एक आईसी क्रिएट करके एक पर्सनलाइज पार्टिसिपेशन की जरूरत है, क्योंकि एवरीवन नीड्स टू बी कन्विंस्ड दैट माय हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज नॉट द वन समवन डॉक्टर्स कैन ऑफर यू. डॉक्टर कैन लीड यू, डॉक्टर कैन हेल्प यू, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट. You have to be convinced to follow healthy lifestyle. That is nothing but Ayurveda, knowledge system of health and happy life. और यही इसी को ही एक साइंटिफिक, क्योंकि जो जितने भी नोबेल प्राइजेस मिले पूरे पिछले 3 साल का हमने हिसाब देखा, तो नोबेल प्राइज इज फॉर द इंटरमिटेंट फास्टिंग, फॉर द ऑटोफेजी, सही समय पे भोजन करना, सूर्य के साथ, सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ, सूरज के साथ चलना. Our diet should be morning breakfast, lunch and dinner should be between sunrise to sunset. वो 2 बार का खाना, यही तो आयुर्वेद कहता है. But the molecular understanding and the research and the innovation, the Nobel Prize was won by someone else. So if India all put together, we put together as our all research councils, our innovation, DBT, DST, सब एक साथ अगर आ गए और हम ही ने रिसर्च किया, तो I think we'll be the one who will get the Nobel Prizes to lead the healthcare of the world. और इसी के लिए 2014 में आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना हुई. Earlier it was the ISM department under the health ministry, and in 2014 a separate ministry was established with the visionary leadership of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and our first minister was Shripad Naik ji. Now it is our Sarvananda Sonowal ji and Mahendra Bhai Munjapara is our Minister of State, and the Secretary is Vaidya Rajesh Koteja, and the ministry has really
contributed a lot in the form of education, in the form of research, public health, and also industry and globalization of Ayurveda, where we say that the future of the medicine, either it's no medicine. I really mean to say that the future of the medicine is the no medicine, because if we really create awareness and convince everyone and able to change the mindset of the people to follow healthy lifestyle, that is the main mandate of this ministry, to promote, create awareness and about this and promote about the success stories of the research and innovations in the preventive medicine. That is the education and the public health and IC material. That's why we say that the no medicine is the future of the medicine, क्योंकि हमारी जो योग है, वो योग has become the part of everyone's lifestyle. और ये मिनिस्ट्री का मैंडेट से इंटरनेशनल योगा डे एंड होल गवर्नमेंट अप्रोच से, माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से, almost more than 200 countries are following international yoga day. But it is not only one day, but every day हम योग कर रहे हैं. और सभी में, एजुकेशन में, रिसर्च एजुकेशन में, कॉलेजेस में, घर घर में योग पहुंचा है. उसी के साथ साथ आयुर्वेद भी नेशनल इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे भी मना जा रहा है. और आयुर योग ये जो मॉडल है, ये हम हर दिन हर घर आयुर्वेद कहते हैं. और पहले पिछले साल हर घर आयुर्वेद था, बट नाउ इट इज आयुर्वेद बाय एवरीवन, बिकॉज फैमिली इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इंडिविजुअल person. So every individual person should follow healthy lifestyle and also do the yoga for to remain healthy, happy, because this knowledge system is not about the health, but it is also about attaining the holistic well-being. So आयुः वेदः, आयुषो वेदः, तो ये सुखा सुखम हितम दुखम जैसे हमने कहा है, तो इट इज अबाउट फॉलोइंग. और हम आज यही कहते कि हमारी जो जर्नी है, द जर्नी इज अबाउट नॉट from bringing illness to wellness, but the journey is about illness to wellness to make everyone happy. So the journey is illness to wellness to happiness. So that's the added advantage of following this holistic and integrated system of knowledge system, which is a true contribution, and it is a soft power of India. And जो हमारी एक पूरे वर्ल्ड को अगर एक भेंट है, सो इट इज दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी फ्रॉम दिस सिस्टम, इंडिजिनस सिस्टम, वेयर वी ऑफर नॉट ओनली हेल्दी लाइफस्टाइल बट द हैप्पीनेस, द मॉड्यूल्स ऑफ हैप्पीनेस एंड द मेडिसिनल प्लांट एंड थ्रू बायो प्यूरिफिकेशन, जो होलिस्टिक मॉड्यूल है, उससे हम सब किसी को स्वस्थ रख सकते हैं. द सेकंड इज क्योंकि हमने देखा कि देर इज अ चैलेंज टू टेक. हमने अगर कहा कि फ्रेश खाना खा लो, हेल्दी लाइफस्टाइल को लो, दौड़ मारो, बट दिस प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज नॉट दी वन विच वी कैन फॉलो. सो इट इज अ फ्यूचर इज इन इंटीग्रेशन. सो आयुष मिनिस्ट्री के कई सारे ऐसे पहल है दैट वी आर इंटीग्रेटिंग आर नॉलेज सिस्टम विद दी जो एक नेशनल रिसर्च कंसोर्शियम है, जिसमें secretary is the chair, but we have the collaboration. This national research consortium is with DBT, DST, DSIR, और ये सभी से लेके जो जितने भी थर्स्ट एरियाज है, जो स्ट्रेंथ है आयुष की, जैसे डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स, इसके लिए सॉल्यूशन निकालना एंड डू द रिसर्च इज अगेन द मैंडेट. So Ayush Ministry during last 10 years has worked in main 4 areas. One is the education, skilling, research, industry, innovation, and in public health. And in few minutes, if we have to say that the पहले जो एक 1200 करोड़ का जो बजट था during last 10 years, it has increased to triple, जो 3000 करोड़ से भी ज़्यादा बजट हो गया है. और पहले जो एंड दिस इज द ओनली सेक्टर, आयुष का जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा 173 कंट्रीज में ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लेकिन कहीं प्रैक्टिस ऐसे है, कहीं प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, ऐसे कोई फोकलोर हीलर्स है. लेकिन जैसे कन्वेंशनल मेडिसिन की एक कंप्लीट हेल्थ सिस्टम, जिसमें डॉक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, कॉलेजेस,
पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिसिन एंड पेशेंट, तो एक जो हेल्थ केयर सिस्टम जैसे एलोपैथी है, ऐसी ही कंप्लीट हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में है. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष उसको लीड करती है. वी हैव मोर देन 800 आयुष इंस्टीट्यूशंस और यहाँ वी आर रेगुलेटेड बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और एक रेगुलेशन है. एजुकेशन को NCISM एक रेगुलेटरी बॉडी है एंड वी हैव रजिस्टर्ड 700,000 प्रैक्टिशनर्स, 7.5 लाख से भी ज्यादा प्रैक्टिशनर्स ये रूरल इंडिया में अपनी सर्विस दे रहे हैं. और जो हमारी एक नीड है कि जैसे कि अभी डॉक्टर विनोद पॉल सर ने भी कहा था कि टर्शरी केयर का मॉडल इंडिया का है ही नहीं. 300 साल पहले यहाँ पे अंग्रेज आए, उन्होंने एक हमारे एक देन दे दी. दैट इज द वेस्टर्न मेडिसिन, कन्वेंशनल मेडिसिन व्हाट वी से, दैट बिकेम द मेन स्ट्रीम मेडिसिन. लेकिन इसके पहले हजारों साल जो हमारी धरोहर थी, कोई भी मरता तो तभी भी तो चैलेंजिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बट आर प्राइमरी हेल्थ केयर इज द मेन बैकबोन ऑफ आर हेल्थ केयर डिलीवरी. And our Ayush registered practitioner doctors, they are doing the service to the nation, service to the humanity. More than 7 lakh practitioners, they are registered and they are doing through PHC. And we also have the vertical like public health, PHC, CHC and tertiary care and All India Institute of Ayurveda. It's a aims for, I welcome Balkrishna Maharaj ji also here. And we also have the tertiary care model as All India Institute of Ayurveda is the aims for Ayurveda. We have in public health, we have more than 8,500 Arogya Mandirs which are already established by under National Ayush Mission, and 12,500 are the one which are to be established as a stand-alone public health models. Maha wellness, health and wellness will be the main as a prevention. As NAM it is already there. And उनका एक जो टेक्नोलॉजी से डेटा कैप्चर करके what is the documentation, how more than 8 crore people have used, they are the beneficiaries during after the establishment of these centers. And during last year, जब हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये एक आयुर्वेदा डे का जो मोटो था, तो मोर देन 40 करोड़ पीपल, हमारी 140 करोड़ की आबादी है, तो मोर देन 40 करोड़ पीपल हैव यूटिलाइज एंड दे हैव फॉलोड दिस आयुर्वेदा एंड योग मॉडल, जो हमारा आयुर्योग से हम प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव कर रहे हैं. रिसर्च में भी रिसर्च कंसोर्शियम है. वी हैव वेरियस टेक्नोलॉजी, ई चरक, नमस्ते जो पोर्टल है एंड ICD-11 इज द वन जो अभी WHO के साथ भी किया. एंड देर आर 22 solutions in the technology where ministry has Ayush Grid is the one IT backbone. वो MIT से साथ Ministry of Information Technology के साथ मिलके ministry is creating the IT technology solutions. And जैसे कि अभी किसी ने पूछा था IIT में आप क्या कर रहे हैं, so through hackathon we are also providing the solutions and technology. और अभी जो breast cancer की बात हुई थी, so All India Institute of Ayurveda and IIT Delhi, we are working to develop 7 technology solutions, and ministry is also working in the various research parks as IIT Jodhpur, IIT Madras, and that is the program called as Ayur Tech. And with CSIR, we have joined PhD also for developing the research and solutions. And for breast cancer, a innovative method for diagnosis with lysosome. सलाइवा से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं. एंड वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स लाइक करकुमा लौंगा एंड दारू हल्दी, उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी अगर हम बहुत सिंपल नॉन इन्वेजिव तरीके से देखें, सो डायग्नोसिस इज ऑल्सो आवर स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंशन इज ऑल्सो स्ट्रेंथ, एंड ऑल्सो द ट्रीटमेंट होलिस्टिक सोल्यूशन विद द इंटीग्रेटेड मैनर. सो वी आर ऑल्सो वर्किंग क्लोजली विथ एम्स, NICPR, झज्जर के साथ काम कर रहे हैं. एंड अगर CCRS हमारे काउंसिल के अगर आपने डेटाबेस रिसर्च पोर्टल देखा, तो मोर देन 40,000 आपको सॉल्यूशंस वहाँ जो रिसर्च पब्लिकेशंस और रिसर्च नॉट ओनली इन द ड्रग बट ऑल्सो इन द क्लिनिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, सभी प्रकार के एरियाज में हैविंग द होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मॉडल हम कर रहे हैं. इंटरनेशनली मोर देन 50 कंट्रीज में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है एंड 150
कंट्रीज में आयुष के प्रोडक्ट्स भी जा रहे हैं. सो एवरीथिंग इज इन अ रेगुलेटेड मैनर. जो क्वालिटी सेफ्टी फिर किसी के लिए फार्माकोपियाज है, स्टैंडर्डाइजेशन भी कर रहे हैं. एंड इवन विद BIS देयर इज अ वर्टिकल विच एंश्योर्स द क्वालिटी सेफ्टी and the standards of not only the product but also the services. क्योंकि आयुष की strength is not only in the product but also providing a service. क्योंकि Heal in India and Heal by India इसमें हमारा जो एक वेलनेस का मॉडल है, एक प्रिवेंट, क्योंकि सर्जरी करने लोग यहाँ आएंगे Heal in India के लिए. मेडिकल टूरिज्म इंडिया इज शुड बी द टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है. तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी प्राइम मिनिस्टर सर की इनिशिएटिव से एक आयुष वीसा कैटेगरी सेपरेट इनिशिएट की है, वेयर द एक्सपर्ट ऑफ सर्विसेज वुड बी द मेन प्रायोरिटी. और लोग यहाँ आएंगे तो एक स्टैंड अलोन हेल्थ एंड वेलनेस के लिए भी आ सकते हैं. एट द सेम टाइम सर्जरी के बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन रिहैबिलिटेशन के लिए भी यही आ सकते हैं. तो मिनिस्ट्री का ने एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, तो मुझे लगता है कि हर एक सेक्टर में एजुकेशन, रिसर्च एंड इंडस्ट्री में भी इसके बहुत ज़्यादा फर्क हुआ है. आयुष इंडस्ट्री का साइज 8 टाइम्स ग्रो हुआ है. एंड पोस्ट कोविड जब 150 रिसर्च प्रोजेक्ट्स आए, इंडिया के हर किसी को ट्रेडिशनल मेडिसिन ने प्रिवेंटिव और एक कॉम्प्लिकेशन से बचाया. मॉर्टेलिटी रेट इसलिए कम था क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन वॉज इंटीग्रेटेड. हमारे आयुष काढ़ा हो, आयु रक्षा किट हो, ये सभी के साथ जितने रिसर्च प्रोजेक्ट किए. एंड वी ऑल्सो हैव अ वेरी गुड पब्लिकेशंस ड्यूरिंग कोविड टाइम. जैसे एक आयु रक्षा किट हमने 80,000 दिल्ली पुलिस को दिया था थ्रू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. तो उसका जो एक पब्लिक हेल्थ रिसर्च, उसका जो एक आउटकम हमने मेजर किया, उसका जो नतीजा था, दैट हैज बीन पब्लिश्ड इन फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ. एंड दैट सेज दैट द पीपल हु यूज्ड आयुष काढ़ा हैड अ लेस एंटीबॉडी, 17% भी थी, और जिन्होंने नहीं लिया उनको 54% हुई. So that really also gives us the strength. थैंक यू सो मच मैम. आपने इतनी सारी इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बातें आयुष के बारे में, आयुर्वेद के बारे में बताई. बहुत सारे सवाल आपके लिए हैं, आप प्लीज अपनी जगह लें. A big round of applause for Dr. Tanuja. Yes, I will just contribute to one because that has not touched the sector, is the education. क्योंकि education is the key of the entire reform. क्योंकि education अच्छा. So एक नेशनल कमीशन ऑफ आयुष सिस्टम और होम्योपैथी आयुर्वेद एंड ऐसे 2 पॉलिसी रिफॉर्म हुए. और जो शिक्षा पहले गुरुकुल थी, सो नाउ इट हैज बिकम अ कुलगुरु सिस्टमैटिक हुई है. इट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम. और नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स, लेकिन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए. तो एक स्किल काउंसिल भी हमारी बनी है जिसके स्किल बेस्ड प्रोग्राम भी है. सो दीज आर द रिफॉर्म्स. और एक पूरी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है कि जिसमें पूरी नेशनल बेस काउंसलिंग होती है, नीट होती है. सो प्रोसेस द क्वालिटी एजुकेशन इज ऑल्सो द की दैट वी आर ट्रांसफॉर्मिंग. सो द एंड आई कैन विल एंड ओनली माई कंप्लीट. इट वॉज अर्लियर प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस. लोगों की ट्रेडिशनल मेडिसिन, फिर एक्सपीरियंस. लोग कहते कि दाखला दिखाओ, सो एविडेंस चाहिए. तो इट वॉज प्रैक्टिस बेस्ड एविडेंस, बट नाउ वी आर मूविंग टू शोकेस एज अ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. और किसी ने कहा था कि WHO में जामनगर में कहीं हुआ है. सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द पार्टनर फॉर एस्टेब्लिशिंग ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन. और उसी का ही एक मैंडेट है. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल सेंटर. उसका जो एक जो टास्क फोर्स है उसमें. सो द मेन मैंडेट इज क्रिएटिंग एंड सिंथेसाइजिंग द एविडेंस. जितने भी 173 कंट्रीज में ट्रेडिशनल मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटिस के लिए सॉल्यूशन चाहिए. सो सिंथेसाइजिंग ऑल द एविडेंसेस ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन. और उसको अगर AI बेस्ड हमने सिंथेसाइज किए, जिसमें आयुष का भी हमारी स्ट्रेंथ है इंडिया की, और उसको सिंथेसाइज किया और हमने मेन हेल्थ केयर में उसको कंट्रीब्यूट किया कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि हमारा रोल कॉम्प्लीमेंट्री भी है, स्टैंड अलोन है. तो इट इज अ
पीपल सेंट्रिक इंटीग्रेशन, तो लोगों के लिए एक अच्छा मॉडल मिलेगा. एंड द मोटो इज हेल्थ फॉर ऑल एंड नो वन शुड लिव बिहाइंड. तो ये GCTA, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इज रियली प्लेइंग अ बिग रोल फॉर हैविंग दिस पीपल सेंट्रिक इंटीग्रेशन एज अ हेल्थ फॉर ऑल. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. Very well said. A big round of applause for Dr. Tanuja ji. मैम, बहुत सारे सवाल आपके लिए हैं आयुर्वेद से जुड़े हुए. प्लीज आप आए. आयुर्वेद हम सब जानते हैं 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है और आज भारत से निकलकर ये दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही हैं. लंदन से लेकर जर्मनी और देश के अलग और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आयुर्वेद हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं. और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जोर है कि ये एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह ना देखा जाए बल्कि एक फंडामेंटल हो हमारी नेशनल हेल्थ अप्रोच का. हम इस पर सवाल लेना चाहेंगे. बहुत सारे लोग हैं जो कि सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर तनुजा जी से. जी प्लीज माइक इन्हें दिया जाए. Hello, ma'am. I am Vishu. I'm a reporter at ANI. I just wanted to know, there is a lot of misconception around Ayurveda also. Like physicians in general are very critical about Ayurveda. Some physicians, who practice allopathy. So how can we deal with it? How can we make people understand? How can we generate knowledge about Ayurveda so that a positive environment around Ayurveda can be created? सबसे पहले आयुर्वेद इज नथिंग बट द जो हमारी दादी माँ नानी माँ के नुस्खे, इट इज बेस्ड इन आवर ट्रेडिशन. व्हाट वी आर फॉलोइंग इज वी आर यूटिलाइजिंग द आयुर्वेद. अगर रीजनल जो हमारे सीजनल रेजिमेन है, डेली रेजिमेन है, एवरीथिंग इज नथिंग बट आयुर्वेद. लेकिन जो आपने कहा कि इट इज नॉट ओनली अ ट्रेडिशनल मेडिसिन बट इट इज अ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. ये एक लोगों में एक जो मिस नोशन है कि ये झाड़ फूक है, ऐसा लगता है लोगों को. इट इज नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, सिस्टमिक नहीं है ऐसा लोगों को लगता है. बट देयर इज अ स्टैंडर्डाइजेशन, देयर इज अ क्वालिटी इन एवरीथिंग. क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी रिसर्च, इंडस्ट्री की GMP स्टैंडर्डाइज, GMP सर्टिफाइड हमारे प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज भी एक्रीडिटेशन बोर्ड है. इसकी लोगों तक पहुंचाना, ये जैसे ANI भी हमारे साथ जुड़ जाए, मीडिया हमारे साथ जुड़ जाए, तो आई थिंक व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू कम्युनिकेट. जो हमारी सक्सेस स्टोरीज है, जो रिसर्च है, वो लोगों तक पहुंचाना, दैट इज द नीड. द मार्केटिंग ऑफ द एविडेंस बेस्ड सक्सेस स्टोरी इज रियली रिक्वायर्ड. बिकॉज Ayurveda doctors are also a certified, recognized, legally accepted doctors, and they are also doing a evidence based practices. And अगर कोई एलोपैथी लिखता भी है, so he is legally allowed, and the extent to which he has been taught. 30 to 40% conventional medicine ये हमारे करिकुलम और सिलेबस का हिस्सा ही है, only to cater primary need. But we don't really do. All India Institute of Ayurveda में आएंगे. So we have treated 24 lakh patients during its inception. 2018 से आज तक हमने 24 लाख पेशेंट को ठीक किया है with all our extension services at Goa, Mussoorie, IIT and Kevadia and also Safdarjung and many others. लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ, मुझे खुद सब कुछ आता है, but I don't prescribe even a paracetamol. So what we have done is for 24 lakh patients with holistic and integrated facilities. किसी को डायबिटीज है तो I have a database of more than 60,000 patients of diabetes pre and post. HbA1c मैं आपको दिखा सकती हूँ कि उसमें फर्क होता. पहले 11 था, अभी 5.5 आया. And how it has been done, that holistic and integrated way of doing the practice and integration is with the technology, and we have co-location of the doctors wherever required. We have a mutual respect, and we refer, and our allopathy partner treats if required.
So this success story will be definitely convinced only we create documentation. HMIs, my friend Ms. Bajaj was also telling, the documentation is very required and that needs to be communicated to the people. थैंक यू सो मच. हम सवाल जवाब जारी रखेंगे. इस बीच आचार्य बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ. सर प्लीज मंच पर आए. आचार्य बालकृष्ण योग और आयुर्वेद के अग्रणी जानकारों में से एक हैं. पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ और चेयरमैन हैं. सर प्लीज. नहीं प्लीज आप बैठिए. हम आचार्य बालकृष्ण से भी सवाल जवाब करेंगे, लेकिन अभी डॉक्टर तनुजा जी से कुछ सवाल और कुछ लोग पूछना चाहते थे. जी हेलो मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग आयुर्वेदा को घर घर तक पहुंचाने के लिए घर घर आयुर्वेदा एक नया कार्यक्रम शुरू किया है सरकार ने, और आरोग्य मंदिर भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी बाहर से लोग हमारे यहाँ आते हैं इंडिया में ये चीजें सीखने और करने के लिए, बट अभी लोगों तक जो इन हाउस लोग हैं उन तक पूरी जानकारी नहीं पहुंची है. उसके लिए सरकार अभी और क्या प्रयास कर रही है? लाइक आप लोग किस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं? जैसे कि सरकार योग भी हर दिन हर घर योग, नेशनल इंटरनेशनल योगा डे आचार्य बालकृष्ण जी बताएंगे उसके बारे में. हमारा एक एम योगा ऐप है, बाय ब्रेक है, क्योंकि हर कोई योग अगर जाके हम पूरा कर भी नहीं सकते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, WHO के माध्यम से वाई ब्रेक तो किया, एम ब्रेक योगा ब्रेक ऐप किया. वो एविडेंस बेस्ड था कि हर रोज हर कोई अगर ऑफिस में बैठ के 5 मिनट का भी समय निकाले सुबह शाम, सो वी कैन डू, एंड थ्रू मोबाइल यू कैन डाउनलोड दैट वाई ब्रेक एंड योगा ब्रेक, एम ब्रेक. तो ऐसी कई सारी पहल घर घर तक योग और आयुर्वेद और आयुष ले जाने के लिए सरकार कर रही है. वी हैव नेशनल आयुष मिशन कि उसके तौर पे इट इज नॉट ओनली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जैसे कि आरोग्य मंदिर है, लेकिन उसकी कई सारी स्कीम है. आयुष ग्राम है, हेल्दी एडॉप्शन ऑफ द विलेजेस, कि जिसमें घर घर जाके आया ANM जाके हमारे वर्कर्स जाके घर घर में जाके हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताए एंड कन्वर्टिंग द विलेजेस इनटू अ हेल्दी विलेज. ऐसी कई सारी स्कीम है. वी सपोर्ट क्रिएट नेशनल आरोग्य आयुष मेला, आयुष पर्व है कि जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में जाके वी गिव द प्लेटफॉर्म वेयर द इंडस्ट्री एंड द सर्विस सेक्टर्स दे शोकेस देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड वी क्रिएट जो IEC जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के माध्यम पे एक जो लिमैन के लिए हर किसी के लिए जो अवेयरनेस लेक्चर्स रखना, पॉपुलर लेक्चर्स रखना की पर्सनालिटीज के, ओपिनियन लीडर्स के, दैट ऑल्सो वी डू. वी ऑर्गेनाइज seminar, workshops at nationally and internationally also. So with all various tools and technology, we are trying to communicate and to reach out to the people. तो आयुष आपके द्वार is the one पहल of Ministry of आयुष कि जिसमें नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के माध्यम से या हर किसी के, हम आपके यहाँ लोग आए, इसके बजाय हम ही आपके यहाँ आके कि हमने मेडिसिनल प्लांट का भी मोर देन 75,00,000 सैपलिंग्स घर घर में जाके जो हेल्दी वे ऑफ लिविंग के बारे में वहाँ जाके करें. एक बहुत अच्छी पहल मैं बताऊंगी लास्टली कि एक प्रोफेसर आयुष्मान इज दी कैरेक्टर की एक कॉमिक बुक सीरीज बनाई थी, जिसकी मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और प्रधानमंत्री जी ने ही उसको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में उस सीरीज के सेकंड का रिलीज किया था. तो उसमें यह है कि प्रोफेसर आयुष्मान इज अ कॉमिक कैरेक्टर कि जो मेडिसिनल प्लांट की जानकारी
बच्चों तक पहुंचाते स्कूल एजुकेशन में. सो विथ दीज इनोवेटिव टूल्स, स्टोरी बुक्स, वो स्कूल एजुकेशन में पहुंचा है. वहीं से घर घर में जाके ये दादी माँ नानी माँ के नुस्खे भी, मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी, हेल्दी लिविंग के बारे में, होम केयर के बारे में जानकारी हम पहुंचाते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया तनुजा जी ये सवाल देने के लिए. और अब हम गुजारिश करेंगे आचार्य बालकृष्ण जी से कि वो अपने विचार रखें आज के इस विषय पर, योग, आयुर्वेद और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बढ़ते प्रचार प्रसार और इसके महत्व पर. हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट श्री मनसुख मंडाविया जी, यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, केमिकल और फर्टिलाइजर मामलों के मंत्री जुड़ चुके हैं. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री मनसुख मंडाविया जी का. कुछ ही पलों में डॉक्टर मनसुख जी हमें संबोधित भी करेंगे, उनके विचार सुनेंगे. आचार्य बालकृष्ण जी. भारत माता की वंदे. भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत सुंदर बनाने के लिए एएनआई के माध्यम से आयोजित यह पवित्र कार्यक्रम और हमारे इस देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी और आदरणीय बहन नेसारी जी और एएनआई के सभी वरिष्ठ जन और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध आयुष और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मेरे भाइयों और बहनों. प्राचीन काल से ही हम सब सुनते आए हैं, पहला सुख निरोगी काया. संसार की कितनी भी ऊंचाइयों को हमें पाना है, समुद्र की गहराइयों को नापना हो, चाहे आसमान की ऊंचाइयों को छूना हो, जीवन में किसी भी उन्नति और समृद्धि की ओर हमको बढ़ना हो, यदि सेहत है तो सब कुछ है. जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, स्वयं ही नहीं अपितु संपूर्ण परिवार परेशान और पीड़ित होता है. साधन के साथ साथ में बहुत सारा समय भी उसमें चला जाता है. इसके लिए हमारा आयुर्वेद हमेशा से कहता रहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम. हमको ये ध्यान रखना है कि जो प्रिवेंशन है, हम रोगी ही ना हो, हमें उन उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए और वह उपाय आयुर्वेद और योग के द्वारा ही संभव है. आज माननीय प्रधानमंत्री जी के पुरुषार्थ से पूरे विश्व के लोग इंटरनेशनल योगा डे के रूप में योग को मान्यता प्रदान करके योग का आनंद और योग का लाभ उठा रहे हैं. परम पूज्य स्वामी जी ने, रामदेव जी महाराज ने उस योग को घर घर तक, जन जन तक पहुंचा करके आज पूरे विश्व में यदि ऐसा कोई शब्द है जिस शब्द के बेसिक अर्थ को यदि लोग जानते हैं तो योग शब्द है. योग यदि आप दुनिया में जाकर के किसी से भी बोलोगे तो ये तीन चीज बता देगा. कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कुछ मेडिटेशन. तो तीन चीज उसको पता है. कुछ आसन करना है, कुछ श्वास की क्रियाएं करनी है, कुछ ध्यान करना है. इसका नाम योग है. वो चाहे सीधा कर रहा हो, चाहे पूरा कर रहा हो, चाहे अधूरा कर रहा हो. पर पूरे विश्व का जो जनमानस बहुत तादाद में इस योग को समझ चुके हैं. नेसारी जी बहन अभी आयुर्वेद की विविध आयामों और सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बात कर रही थी. हम जब यूं चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, विदेशों में जाकर के भी आयुर्वेद के रूप में प्रतिष्ठापित अभी हो नहीं पाया है. कहीं ना कहीं वो हर्बल मेडिसिन, फूड सप्लीमेंट, इस तरह से वो जा रहा है. जब तक हम आयुर्वेद को आयुर्वेद के रूप में बहुत सारी कंट्री में हम जाते हैं, बहुत सारा जो जनमानस है उसको यह भी बोध नहीं है कि आयुर्वेद वस्तुतः चिकित्सा विज्ञान है या आयुर्वेद भाषा है. कई बार लोगों को लगता है संस्कृत में जो दवाइयां लिखी होती हैं
वो औषधियों का नाम आयुर्वेद है, इतनी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए पतंजलि ने एक बहुत सुंदर कार्य किया। हमारी द साइंस ऑफ आयुर्वेदा, जिसको हम आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य बोलते हैं, आज लगभग दुनिया की 70 भाषाओं में वो पुस्तक प्रकाशित हो रही है। और हमें ये कहते हुए प्रसन्नता है कि उसी देश के लोग, हम यहां से छाप करके उन भाषाओं में नहीं भेज रहे हैं, अभी तो उसी कंट्री के लोग उस भाषा में उस पुस्तक को छाप करके वो अपने देश में वितरित कर रहे हैं। ये आयुर्वेद की सबसे बड़ी एक विजय यात्रा है, विजय गाथा है। क्योंकि हमारा वो ध्यान उस ओर नहीं है। हम बोले हमारा आयुर्वेद लोग नहीं मानते। अरे आयुर्वेद को तब मानेंगे जब आयुर्वेद शब्द के अर्थ का बेसिक बोध, जैसा अब योग दुनिया मानने लगी, क्योंकि योग मतलब उनको पता चला कि योग मतलब क्या है। अभी लोगों को पता नहीं कि आयुर्वेद मतलब क्या है, तो हमें आयुर्वेद मतलब यह है, ये समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये प्रयास किया। और भी प्रसन्नता की बात यह है, दुनिया की सब भाषाओं में किताब छप रही थी। चाइना में छपवाने के लिए बहुत सारा क्वायरीज और क्वेश्चंस, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अपने पद्धति के प्रति थोड़ा आग्रही होते हैं, वहां से भी छपा और उर्दू में पाकिस्तान से भी छपा। यानी आयुर्वेद देश की सीमाओं को जोड़ने का भी काम करता है। यह एक मैं विनम्र आपको उदाहरण प्रदान कर रहा हूं। दूसरी बात, जब आयुर्वेद की बात आती है तो हम लोग, मैं बहन जी से भी निवेदन करूंगा, बहुत सारे आयुर्वेद के प्रबुद्ध यहाँ पर लोग हैं, कुछ गलती हम लोग भी करते हैं। जैसे हम आयुर्वेद के बच्चों को पढ़ाते समय एजुकेशन में हम पढ़ाते हैं आयुर्वेद का इतिहास। मैं आयुर्वेद के इतिहास को पढ़ाने का विरोधी नहीं हूं, पर हमें पढ़ाने की आवश्यकता है विश्व जड़ी बूटी का इतिहास। क्योंकि वर्ल्ड जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम को यदि हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि आयुर्वेद कहां पर खड़ा होता है। जब हमको यह बोध होगा कि विश्व के अंदर हम यहां पर खड़े हैं, तो उससे लोगों का जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, विश्व के लिए काम करने की भावना है, वह और बलवती होगी। जब हमको पता चलता है कि हम तो कहते हैं ना कि जिसका गुरु पहलवान उसका चेला बलवान, जब हमें पता चलेगा कि दुनिया की पद्धति में हम इतने ऊंचे हैं, तो उनको पता चलने लगेगा। तीसरी चीज, सरकार की पॉलिसी की बात है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। भारतवर्ष के अंदर में हम 2 धाराओं में जब बात करते हैं रोगों की रोग को ठीक करने की बात या रोगी को निरोग करने की बात, तो हम सबका लक्ष्य तो एक है। चाहे वो किसी भी पैथी का प्रैक्टिस कर रहा हो, भाई उसके पास कोई रोगी आता है, चिकित्सक प्रयास करता है कि मैंने उस रोगी को ठीक करना है। और पैथी की जहां तक बात है, पैथियां तो वो जब तक हाथ में गोली, जो हमारी सफेद, नीली, काली, हरी गोली, चूर्ण, पाउडर इस हाथ में है तब तक है। पेट में तो बायोकेमिस्ट्री काम करेगी, गोली थोड़ी काम करेगी। अंदर तो उसका एक्टिव कंपाउंड काम करेगा ना। पेट में गया तो वो पेट थोड़ी कह रहा है कि तूने मेरे पेट में क्या डाला है। तो यह सोच को देश और दुनिया की आवश्यकता है। हमारे देश में इसको विकसित करने की आवश्यकता है। ट्रूली जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं ना, इंटीग्रेटेड की हम बात करने लगे, पर ट्रूली इंटीग्रेटेड होना चाहिए और सब विधाओं के लोग बैठ करके करें। क्योंकि चाइना में 1972 में, उससे पहले जैसे हमारी देश की स्थिति, आज हम मेडिकल सिस्टम को लेकर के थोड़ा सा पूर्व पश्चिम रहते हैं, कुछ ऐसी ही स्थिति थी। परंतु बाद में उन्होंने चाइनीज मेडिसिन सिस्टम के लोगों ने वो सिस्टम को एक ही बना दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कोई लॉयर बनने के लिए जाता है, लॉ की पढ़ाई करने के लिए जाता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो शुरू में 2-3 वर्ष तो सब तरह की सभी चीज को पढ़ते हैं। बाकी स्पेशलाइजेशन के लिए फिर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइजेशन में वो उसके स्पेशलिस्ट बनते हैं। ऐसे मेडिसिन सिस्टम के अंदर में यदि भारत से बहुत सारे बच्चे, मैं कई कॉलेजों को मैंने वहां पर भ्रमण किया है, मैंने देखा है वो MBBS बनने के लिए जाते हैं, पर 3 साल चाइनीज मेडिसिन पढ़ना उनके लिए मजबूरी है। वो भारत में आकर के वो चाइनीज मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, वो MBBS डॉक्टर बन के आने वाले हैं। और जो देश की हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत वो उस योग्यता को भी अर्जित करने वाले हैं, परंतु उनको वहां पढ़ना जरूरी है।
इसी तरह से क्या इस देश में नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है। इससे क्या लाभ होगा? सबसे पहले तो बहन जी शायद खुश हो जाएंगे क्योंकि आयुर्वेद वाली हैं। लगभग 2200 हमारे डॉक्टर्स, जहां तक मुझे अभी संख्या बढ़ गई होगी, यूएसए के अंदर है, जो आयुर्वेदिक हैं, एमडी भी हैं, उसमें ग्रेजुएट भी हैं। चाइनीज मेडिसिन सिस्टम वाला वो अपने चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिस को धड़ल्ले से अमेरिका में कर सकता है क्योंकि उसकी डिग्री वहां पर मान्य है। परंतु मेरा आयुर्वेद का बीएमएस और एमडी जाता है, मुझे पीड़ा होती है, किसी के बॉडी शरीर को टच भी नहीं कर सकता, वहां का एक कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद में वो थेरेपिस्ट का काम कर सकता है, उससे पहले वो भी नहीं कर सकता है। तो उससे हमारी कितनी बड़ी हानि हो गई। तो हमारा आयुर्वेद तो फिर दरवाजा बंद हो गया, हमारे देश से बाहर जाने का जो दरवाजा था। आज हम भी आयुर्वेदिक औषधियां दुनिया में पहुंचा रहे हैं, परंतु हर्बल सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट के रूप में। ठीक है, यूएसएफडीए के जो उनके प्रोटोकॉल हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, हम बेचते हैं। परंतु आयुर्वेद को आयुर्वेद के रूप में विश्व में स्थापित करने के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा निवेदन कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने एक काम शुरू किया वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में। ये एक कालजयी कार्य है, पतंजलि के द्वारा किया गया। पूरे दुनिया के अंदर जो पादप जगत है, लगभग 3,60,000 प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में है। पहली बार पतंजलि ने यह चेकलिस्ट बनाने का प्रयास किया कि कितने प्लांट्स हैं जो मेडिसिनली यूज किए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइज या किए जा सकते हैं। तो हमने काम करते हुए हमको ये पता चला कि ये सेम काम को तो WHO ने भी शुरू किया था। 1999 में WHO ने शुरू किया, 2010 में उन्होंने उस काम को बंद कर दिया। करीबन 147 मोनोग्राफ उन्होंने बनाए हैं, 5 वॉल्यूम में छोटी छोटी किताबें छापी है और यह कहकर के बंद किया है कि यह काम तो असंभव जान पड़ता है। WHO के साइट में अभी भी आप देख सकते हैं। पतंजलि ने प्रयास किया, हमको पता नहीं था कि WHO ने शुरू किया, बंद करा, ये तो मेरे को बहुत बाद में पता चला। पर आज कहते हुए हमें गर्व होता है, दुनिया के अंदर जो आप समझते हैं कि ट्रीटमेंट सिस्टम की यदि हम बात करें, सारी धरती में बॉटनी बेस्ड मेडिसिन के ट्रीटमेंट सिस्टम सिर्फ 9 हैं। यदि आप पूरे वर्ल्ड की हीलिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो करीबन 964 हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। हमने उस लेवल तक काम किया। कितने मेडिसिनल प्लांट्स वो यूज करते हैं, किस डिजीज के लिए कौन सा प्लांट्स यूज करते हैं, लगभग 6 लाख रेफरेंसेस के साथ में 6 लाख रेफरेंसेस दुनिया के करीबन लगभग दुनिया के 2000 भाषाएं और लगभग 2000 ट्राइब्स, और इतना ही नहीं, लगभग 2.5 लाख सिनोनिम्स और करीबन 20 लाख वर्नाकुलर नेम। इसके साथ में 109 वॉल्यूम यानी पन्नों की यदि बात करें तो लगभग 1.25 लाख पृष्ठों के अंदर वह कंप्लीट हुआ वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। और उसका विमोचन भी हमने भारत में तो किया था, पहले जो 70-75 हमारे हुए थे, पूरे होने के बाद में रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन में लंदन के अंदर जो बॉटनी की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने देख करके उन्होंने जो अप्रिसिएशन किया कि ऐसा काम भारत से हो रहा है। ये भी अजूबा है। हमारा भारतीय, हमारा वैज्ञानिक, हमारा डॉक्टर दुनिया में जाकर के, आप विदेशों में चिकित्सा कराने के लिए जाते हो, वो सर्जरी करनी है, वो तो चिरफाड़ करने के लिए तो भारतीय मिलता है। यानी कि हमारा आदमी वहां जाकर के उस क्षमता को पाता है। पर यदि भारत की बात आती है तो लोग क्वेश्चन करते हैं, बोले अच्छा भारत में भी इतना बड़ा काम हो रहा है। मैं आपको और बताना चाहता हूं, रॉक्सबर्ग वगैरह ने जो बॉटनी के ऊपर काम किया, आयुर्वेद के एजुकेशन में भी, क्योंकि पौधों की बड़ी महत्ता है, पौधों के ऊपर जो काम करने की बात आती है तो हम लोग बॉटनी वाले आयुर्वेद वालों को थोड़ा सा कमजोर मानते हैं कि उनको पौधों का नॉलेज नहीं है।
औषधीय गुणों का नॉलेज था, पर पौधों का पहचान ही नहीं होगा तो गुणों को कहां से पहचानेंगे हम। और आयुर्वेद वालों ने तो, मैं उसको अलग से भी बताऊंगा, आयुर्वेद वालों ने हम लोगों को नहीं कह दिया बहुत सारे पौधे तो हमारे जो है ये संदिग्ध हैं। मैं हमेशा कहता हूं भाई पौधे संदिग्ध नहीं होते, हम संदिग्ध हैं। नॉलेज मेरा, पौधे का नॉलेज गड़बड़ थोड़ी है, पौधों का नॉलेज तो हमको करना है। यानी हमारी मूर्खता को हमने पौधों पे थोप दिया है कि बोले ये प्लांट, बोला ये संदिग्ध है। क्यों बहन जी ऐसे कहते हैं ना, मैं कहा भाई पौधे संदिग्धता को खत्म करो, अपनी संदिग्धता को ठीक करो। तो ये जो स्थिति है, इससे भी हमको आयुर्वेद को बाहर निकलना हो। और इतना ही नहीं, अभी रिसर्च की बहन जी बात कर रही थी, मुझे इस बात को कहती हुई प्रसन्नता है, आयुष मंत्रालय और भारत सरकार के प्रयास से कोरोना के ऊपर 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और दोनों ही रिव्यू पतंजलि से हुआ है। इसके लिए आपको धन्यवाद करना पड़ेगा कि हम रिव्यू में यदि फेल करते तो छपते नहीं, मैं पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूं। और पतंजलि ने 28 रिसर्च पेपर हाई इंपैक्ट के रिसर्च जर्नल में कोरोना के ऊपर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के रूप में वर्ल्ड में सबसे अधिक प्रकाशन हमने किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि माननीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं और मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगी। क्षमा चाहेंगे कि आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आप अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं 2 मिनट बोल जी 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 नहीं, ग्रहणी ऐसी करनी हो तो बहन थोड़ा सा आप 1 मिनट दे दो, 2 मिनट जी जी तो जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। बहन बुला करके, यदि मैं प्रवाह में कोई चीज बोल रहा हूँ, आप उठे बैठिए। नहीं मैं तो जा रहा हूँ, आप बहन जी मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद आप सबका। और ऐसा कभी होता नहीं है कि आदमी को, ठीक आप समाप्त करिए, आप बोलिए, आपसे आग्रह है, नहीं, आप इसको अन्यथा ये ना लें। ये ढंग नहीं है। आप इसको अन्यथा ना लें। आप बालकृष्ण जी प्लीज आप अपनी जगह लें। माननीय मंत्री जी को हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। श्री मनसुख मंडाविया जी, जो कि चीफ गेस्ट हैं आज के इस फंक्शन के, यूनियन हेल्थ और फैमिली मिनिस्टर हैं, साथ ही केमिकल्स और फर्टिलाइजर मामलों के मंत्री। जोरदार तालियों के साथ श्री मनसुख मंडाविया जी का स्वागत किया जाए। हम आभारी हैं सर कि आपने एएनआई के इस हेल्थ कॉन्क्लेव के लिए समय निकाला। आपसे गुजारिश है कि आप अपने कुछ विचार आज के टॉपिक पर साझा करें। एएनआई के द्वारा आयोजित हेल्थ डायलॉग में मेरे पहले मैं जब आया तब आयुर्वेद के बारे में, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन की उपयोगिता बारे में बात हो रही थी। मैं मानता हूं कि सही टाइम है। और यहां ये भी बात हो रही थी कि हमारी आयुर्वेदा की स्वीकृति दुनिया में नहीं है या तो कम है। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति को अपने की ओर ध्यान खींचना है तो उसको एग्रेसिव होके कुछ अलग करना पड़ता है, तब जाके यहां मैं सामान्यतः आके बैठ जाऊंगा तो कोई मेरे सामने नहीं देखेंगे, लेकिन मेरे साथ एक टोली आती हो, 4-5 लोग आते हो, 2-2 बंदूक वाले आगे पीछे चलते हैं तो लगता है कुछ आया है। होता है कि नहीं होता है? वैसे जिसमें एग्रेशन ज्यादा होता है, जिसका उत्साह ज्यादा होता है, वो पेनिट्रेशन कर जाता है। वेस्टर्न मेडिसिन यानी कि मॉडर्न मेडिसिन, उसके लिए प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ तो उसका एक्सेप्टेंस ज्यादा हो गया। एक समय था हमारे पास
चिकित्सा पद्धति ही आयुर्वेदा थी, वही हमारा जीवन की चिकित्सा पद्धति सालों तक, हजारों सालों तक रही। उसका मतलब ये है कि ये पूर्ण व्यवस्था है, लेकिन आज हमारे पास उसके लिए शायद ज्ञान का अभाव होगा, तो हम उसको भली भांति समझ नहीं पाते होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि ये चिकित्सा पद्धति खामी युक्त है, और कोई भी व्यवस्था में हमेशा समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल होता रहता है, वैसा उसमें और मॉडर्न मेडिसिन में सब जगह में बदलाव आता रहता है। लेकिन हमें उसको सबसे पहले हमें स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। लास्ट पार्लियामेंट सेशन में एक माननीय सम्मानित सांसद जी ने खड़ा होकर मुझे प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि आपने नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों को बदल कर दिया, आप पुरानी मानसिकता के लोग हैं। तो मैंने खड़ा होकर जवाब दिया कि हाँ, हमने नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों में सुश्रुत का फोटो रखा है। मैंने कहा कि क्या हमने गलत करा? जो आज से 2000 साल पहले ये देश में चिकित्सा पद्धति के पितामह है, सारी दुनिया उससे प्रेरणा लेती है। आज आप दुनिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाइए, विश्व की कई मेडिकल यूनिवर्सिटी में सुश्रुत का स्टेच्यू लगाया हुआ है। हमने नहीं लगाया तो हमने गलती की है। क्या एक गलती करेक्ट करने का हमारा अधिकार नहीं है? क्या हमें नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों में ग्रीक का गॉड का फोटो लगाया है? हम कोई गॉड के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम हमारा गॉड का सम्मान नहीं करेंगे क्या? हम हमारी विरासत का सम्मान नहीं करेंगे क्या? मैंने कहा कि मैंने मेरी विरासत का सम्मान करने के लिए मेरी न्यू जनरेशन, हमारे यहां भी साइंटिस्ट थे, उसमें से प्रेरणा लेके मेडिकल साइंस आगे बढ़े, इसलिए फोटो बदला है, ऐसा कहना होता है। मैं वहां बचाव पक्ष में रहता तो दो और क्वेश्चंस खड़ा होता। मैंने कहा हाँ, हमने करा है और करना चाहिए, ये हमारी विरासत है। मोदी जी ने कहा है कि हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हम कौन सा रास्ता तय करेंगे? उसके लिए भी मोदी जी ने रेड फोर्ट पर 5 प्रण लेने की बात कही थी। एक प्रण था हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, दूसरा प्रण था हम डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए रास्ता कौन सा तय करेंगे? तो कहा कि हम विरासत से प्रेरणा लेंगे। कोई व्यक्ति, समाज या संस्था अपनी विरासत से, अपना इतिहास को भूल जाते हैं, वो अपना भविष्य को कभी सुनिश्चित नहीं कर सकता है। हम हमारी विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। उसने तीसरी बात करते हुए मोदी जी ने कहा हम गुलामी के प्रतीक का त्याग करेंगे। हम गुलाम काल के जो प्रतीक है उससे हम प्रेरणा नहीं ले सकते हैं जी। हम हमारे भविष्य के लिए हमारी ही विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे तो हम हमारा विजन के अनुसार देश को बना पाएंगे। चौथा, मोदी जी ने कहा कि हम साथ में मिलकर प्रयास करेंगे, सामूहिकता से काम करेंगे। सामूहिकता से काम करना यानी कि एक व्यक्ति जब कोई प्रयास करता है या तो एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो व्यक्ति केवल एक स्टेप आगे बढ़ सकता है, लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या एक संकल्प के साथ एक डग आगे बढ़ेंगे तब देश 140 करोड़ स्टेप एक साथ में आगे बढ़ जाएंगे। और तीसरी, चौथी और पांचवा बात करते हुए मोदी जी ने कहा, पांचवा प्रण में मोदी जी ने कहा कि बहुत अच्छा सेंटेंस का उपयोग करा है, हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए देश के हर नागरिक का अपना कर्तव्य है। जरूरी नहीं है कि मंत्री ही देश बदलेगा, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ही देश बदलेगा। मंत्री, प्रधानमंत्री से लेके देश के 140 करोड़ की हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री उनके लिए बेस्ट लेवल प्रयास करे, मिनिस्टर उनके लिए बेस्ट लेवल प्रयास करे, हमारे सारे व्यवसाय के साथ लगे हुए हर व्यक्ति जब कोई काम करता है अपने लिए, देश के लिए, जो भी अपने निजी दैनिक क्रम में जो भी व्यवसाय में है, वहां हर संभव सोचे कि मेरा कर्तव्य क्या है। एक डॉक्टर जब ड्यूटी करता है
तब ये सोचे कि मैं मेरी ड्यूटी सही तरह से करूं, मैं टाइम पे मेरे पेशेंट को देखूं, मेरे एक भी दर्दी स्वस्थ होने में थोड़ा भी एक दिन भी लेट होगा तो इतना उसका आउटपुट एक दिन का कम होगा और एक व्यक्ति की एनर्जी देश के लिए एक दिन के लिए कम लगेगी तो मेरे देश को नुकसान होगा। एक जर्नलिस्ट लिखते हैं तो जब वो कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सोचेंगे मैं लिखूंगा तो देश के पर उसकी इंपैक्ट क्या आएगी, मैं लिखूंगा सोसाइटी उसको कैसे देखेगी, कैसे पढ़ेगी, क्या इंटरप्रिटेशन करेगी, क्या मैं कुछ लिखूंगा उससे मेरे देश को नुकसान तो नहीं होता है ना। मैं एक व्यापारी हूं, जब मैं व्यापार करता हूं, ट्रेड करता हूं, तब मैं सोचूं कि मैं मेरे ईमानदारी से ट्रेड करूं, मेरे देश के नागरिक को सस्ते चीजें मिलनी चाहिए, उसका प्रॉफिट भी हो लेकिन सस्ते दाम से मिले, ताकि मेरे देश के कोई गरीब कोई व्यक्ति को महंगी चीजें लेनी ना पड़े, ताकि मेरे देश में सभी को सर्वाइव होने का अधिकार प्राप्त हो। हर व्यक्ति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जहां भी हो वहां नेशन के प्रति कमिटमेंट और डेडिकेशन से काम करेंगे ना। दोस्तों, ये सामर्थ्यवान देश है, यहां ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, केवल कमी थी विल पावर की, जो मोदी जी ने पूरी करी। विल पावर की हमारी जो कमी थी, मोदी जी ने देश में विल पावर का मैंने कई उदाहरण काम करते हुए देखा है। देश में कोविड आया, दुनिया में कोविड दिखने लगा, इंडिया में भी 3-4 केस आज आ चुके थे और मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग रखी थी। एक मीटिंग में मोदी जी ने कहा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे, तो हमारे देश के साइंटिस्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये वायरस अननोन वायरस है, ये म्यूटेट होके आगे जाके कैसा बिहेवियर करेंगे वो हमें पता नहीं है, और इसलिए दुनिया के कोई साइंटिस्ट नहीं जानता है कि उसका म्यूटेशन दुनिया में क्या इफेक्ट करेगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वैक्सीन उसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास तो यही था कि वैक्सीन का रिसर्च दुनिया में हो जाता था और रिसर्च होने के बाद मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 15 साल के बाद वो वैक्सीन यहाँ इंडिया में आता था। चाहे वो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, चाहे वो रूबेला का वैक्सीन हो, चाहे टिटेनस का वैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन हो, रिसर्च दुनिया में होता था, 10 साल 15 साल के बाद इंडिया में आता था। ऐसी स्थिति कोविड में हुई होती तो क्या होता। तब मोदी जी ने कहा था, मैं साक्षी था एक घटना का, कि आप वैक्सीन नहीं बना सकते हैं क्या। तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा था बना तो सकते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बोले थे। आगे का वाक्य मोदी जी ने पूरा करा था कि मैं संसाधन की कोई कमी नहीं रहने दूंगा, मैं संसाधन की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। सफलता आप लोगों की, निष्फलता मेरी। मुझे विश्वास है कि मेरे देश के साइंटिस्ट देश को वैक्सीन देगा। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज 20 दिसंबर 2020 को लगा था। 16 जनवरी यानी कि एक महीने के अंदर 16 जनवरी 2021 में इंडियन रिसर्च इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन, एक नहीं 2 वैक्सीन का डोज लगाने में सक्सेस होने वाला कोई देश है, उसका नाम हिंदुस्तान है। दोस्तों, हम कर सकते हैं। और कोविड के समय के दरमियान एक देश की शक्ति और सामर्थ्य को मैंने बहुत मेरी नजर से देखा है, मैंने फील किया है। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस मैं सारी दुनिया के साथ बात करता था, दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग होती थी, दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती थी, अलग अलग टाइप के ग्रुप के साथ मीटिंग होती थी। सामर्थ्य क्या पड़ा हुआ है, हमारी नजर वहां पहुंचनी चाहिए। वो मुझे पूछते थे कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर कम्स ऑन ड्यूटी इन इंडिया। मैं कहता था यस। वो कहते थे कि नर्स ड्यूटी पर आ रही है। मैं कहता था यस। वो कहते थे पैरामेडिक स्टाफ
ड्यूटी पर आ रहे हैं, मैं कहता था यस, वहां एक क्राइसिस थी, हमारा ये सामर्थ्य था। सामर्थ्य ये था कि हेल्थ ये इंडिया के लिए दोस्तों कॉमर्स नहीं है, हेल्थ हमारे लिए सेवा है। और इसलिए हमारे कई डॉक्टर्स ने, कई नर्स ने, कई पैरामेडिक स्टाफ ने काम करते करते दोस्तों अपना स्वयं का प्राण गंवा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी, देश को बचा लिया। दोस्तों ये हमारा सामर्थ्य है, हमारी ताकत है। और उस वक्त दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, क्राइसिस हो गई थी। सारी दुनिया से मुझे कॉल आता था कि प्लीज यू सप्लाई टू अस इन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, वहां नहीं थी। दोस्तों इंडिया का सामर्थ्य देखिए, उस वक्त मोदी जी ने मुझे कहा था कि भाई मेडिसिन की क्या स्थिति है, तो मैंने एनालिसिस करके कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे जरूरत के अनुसार हमारे देश में मेडिसिन है। तब मोदी जी ने मुझे कहा था कि भाई आपके देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके पास मेडिसिन है तो अच्छा है, लेकिन हमें दुनिया को भी मदद करनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में मानने वाले लोग हैं, हमें दुनिया को मदद करनी चाहिए। इसलिए आप लॉकडाउन में सभी फार्मा कंपनियों के साथ मीटिंग करो, सभी कंपनी के एम्प्लॉइज को लॉकडाउन पास दे दो, फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग चालू कराओ, देश की जरूरतों को पूरी करके दुनिया को भी मदद करो। दोस्तों ये समय के दरमियान लॉकडाउन था, प्लेन उड़ता नहीं था, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी, लेकिन डेली 5 to 7 प्लेन इंडिया में लैंड होते थे मेडिसिन लेने के लिए। हमने 150 देशों में मेडिसिन दी। केवल मेडिसिन नहीं दी, उस वक्त हम भी कई चीजें बाहर से मंगाते थे, लेकिन बाहर जब इंडिया को जरूरत है, दुनिया को जरूरत है और मेडिसिन नहीं है, या तो कोविड के सामने लड़ने के लिए जो सामान की आवश्यकता है, ये दुनिया में क्राइसिस है तो प्राइस बढ़ जाती थी। लेकिन दोस्तों केवल मैंने तो प्रधानमंत्री जी का संदेश कंपनियों को पहुंचाया था कि दुनिया को सहयोगी होने का समय है, हम प्राइस ना बढ़ाए तो अच्छा। भारतीय कंपनियों ने 150 देश में मेडिसिन सप्लाई करी, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाई। दूसरा, 150 कंट्री में से कहां से भी शिकायत नहीं आई कि मेडिसिन पुरियस है। क्वालिटी मेडिसिन, एफोर्डेबल मेडिसिन दुनिया में पहुंचाई। दुनिया में $20 और $25 का वैक्सीन जब बिकता था, तब भारत ने आत्मनिर्भर इंडिया के तहत वैक्सीन बना के कई कंट्री को वैक्सीन मैत्री के तहत मुफ्त दिया, और कॉमर्शियल दिया उसको भी $2 से $3 में दिया। दोस्तों उसका नतीजा ये निकला, पोस्ट कोविड दुनिया ने सोचा कि इंडिया एक ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है जो दिक्कत के समय में वो एक्सपोर्ट बैन नहीं कर देता है, वो हाई प्राइस नहीं लेता है, और सहयोग करने के लिए हमारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए दोस्ती इंडिया से रखनी चाहिए। और आज महंगा हो तो भी दुनिया को इंडिया से खरीदना है, क्योंकि इंडिया से दोस्ती रखनी है, क्योंकि समय आए तब एक ऐसा देश है जो दोस्ती को निभाता है, विश्व मानव सेवा की भावना को प्राथमिकता देता है। दोस्तों हमने कोविड के दरमियान दुनिया को दिखा दिया, हमारे में हमारी क्षमता को हर संभव देखना है, ये हमारी वैचारिक क्षमता है। तो हमारी मैनेजमेंट क्षमता भी कोविड के दरमियान हमने देखी। कोविड के समय में जब दुनिया के साथ मीटिंग होती थी तो वो लोग ऐसा पहले शुरुआत में सोचते थे, इंडिया में जितनी कैजुअलिटी होगी उसके आधार पर वो दुनिया में कितने लोग मरेंगे उसका आंकड़ा पहले से पूर्वानुमानित करते थे, क्योंकि उसको लगता था कि इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी,
1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इंडिया मैनेज नहीं कर पाएगा, ऐसा कई कंट्री के मन में था। तो एक बार ये कोविड चल रहा था और मुझे G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग में इटली जाना हुआ। तो उसमें मेरे पहले 3-4 कंट्री ने अपना प्रेजेंटेशन रखा और उस वक्त वैक्सीनेशन सब चालू हो गया था। तो प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा, एक कंट्री ने, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उचित नहीं, उन्हें अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि हमने 6 महीने में हमारे देश में 70% लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया। एक कंट्री का पॉपुलेशन था 56 लाख ओनली, 56 लाख ओनली, दिल्ली का 4th पार्ट। तो फिर दूसरी कंट्री खड़ी हुई, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। तो प्रेजेंटेशन में उसका 1.25 करोड़ का पॉपुलेशन था, उन्होंने कहा कि हमने 60% लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया 7 महीने में। तीसरी कंट्री खड़ी हुई तो उसका पॉपुलेशन था 90 लाख जितना, उन्होंने कहा हमने 4 महीने में करा 50%। मेरी बारी हुई तो मैंने कहा कि अब चारों लोगों ने इकट्ठा करा, इतना तो हमने डेली करते हैं, आपने 6 महीने में करा। ये देश में देखो मैनेजमेंट क्षमता कितनी है। डेली ऐसा 7 महीना था, 7 महीने तक 1,50,000 सेशन डेली लगा। 1,50,000 सेशन लगता है। अभी आप मैं जब बात करूंगा तब आपके मन में संज्ञान में आएगा कि कैसे कैसे मैनेजमेंट ये देश में हुआ। जब एक सेशन लगता है तो 7 लोग चाहिए, वैक्सीनेटर चाहिए, हेल्पर चाहिए, नर्स चाहिए। 7 लोग जब एक सेंटर पर उपस्थित होते हैं तब एक सेशन लगते हैं। 150 सेशन लगे। आपने कभी ऐसा सुना कि वहां वैक्सीनेटेड तो थे लेकिन वैक्सीनेशन नहीं, वैक्सीन नहीं था इसलिए हम वापस आए? जी नहीं, वैक्सीन था लेकिन वैक्सीनेटर नहीं पहुंचे थे इसलिए हमारा वैक्सीनेशन नहीं हुआ। कभी मैंने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा। आपने ऐसा कभी पढ़ा कि वैक्सीन था, वैक्सीनेटर था लेकिन निडल नहीं थी इसलिए वैक्सीन नहीं लगा? निडल भी थी लेकिन सिरिंज नहीं थी इसलिए वैक्सीन नहीं लगा। जी हां, दुनिया में कई कंट्री थी उसके पास सिरिंज नहीं थी इसलिए वैक्सीन नहीं लगता था, क्योंकि क्राइसिस हो गई थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था, शिप बंद हो गई थी, लॉकडाउन था तो प्लेन बंद था। ऐसी स्थिति में कंट्री क्राइसिस फेस कर रही थी। इंडिया उस वक्त गति से वैक्सीनेशन कर रहा था। दोस्तों, मैंने मॉनिटर किया है, आपने ये भी नहीं देखा होगा कि ये स्टेट के पास वैक्सीन है और ये स्टेट के पास वैक्सीन नहीं है और यहां पड़ा हुआ है। जी नहीं, हर दिन सुबह में 11 बजे मॉनिटर होता था हमारी कंपनी में कितना डोज बना। 11 बजे प्लेन से डोज निकलता था, 11 बजे निकल के 4 बजे तक ये फर्स्ट पॉइंट तक रीजनल सेंटर तक पहुंचता था, रीजनल सेंटर से स्टेट के सेंटर तक पहुंचता था, कोल्ड चेन को मेंटेन करना होता था, वहां से डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर पहुंचता था, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसका मॉनिटरिंग होता था। रात को 11 और 12 बजे 1,50,000 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन पहुंचता था। मेरे ऑफिस में और मेरे घर पे मेरे डैशबोर्ड पर अलर्ट आता था, तब दोस्तों आपके हेल्थ मिनिस्टर सोते थे, तब जाके देश में 220 करोड़ डोज हम एडमिनिस्टर कर पाए। इंडिया कर सकता है और उसका प्रमाण हम तो दे ही दोस्तों, लेकिन बिल गेट्स आजकल इंडिया में है, दुनिया के बड़े आदमी के रूप में जाने जाते हैं। 2-3 कंट्री इकट्ठी हो तब बिल गेट्स एक अकेला हो, ऐसा उसका नेटवर्क है। यहाँ आते हैं तो कोई देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, इस लेवल है उसका, और वो बोलता है तो दुनिया में परसेप्शन बनता है। मैं लास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था तो हमारी एक मीटिंग तय हुई मेरी और बिल गेट्स की। तो हम इंडियन है, किसी को मिलना है, कोई हमें मिलने के लिए आते हैं तो खड़ा होते हैं, गेट तक लेने के लिए जाते हैं। मैं भी खड़ा हुआ, उसको गेट तक लेने के लिए गया, हमने शेक हैंड किया। उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। तब जाके दुनिया में छपता है, तब जाके दुनिया लोहा मानती है कि इंडिया कर सकता है। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से बदलाव हुआ है देश में,
ये हमारा मॉडल के आधार पर हमने बदल करा। हर देश का हेल्थ का अपना अपना मॉडल हो सकता है। दोस्तों, इंडिया का मॉडल हेल्थ सेक्टर के लिए मोदी जी ने अपना डिसाइड करा है। हमारा सामर्थ्य, हमारा शक्ति, हमारी क्षमता, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारी जीवन पद्धति, हमारी जीवन शैली, उसको लेके हम देश के हेल्थ सेक्टर में बदल कर सकते हैं क्या? क्या था दोस्तों? ये थाली बजाना, ताली बजाना क्या था? थाली और ताली प्रधानमंत्री जी ने इसलिए बजाई थी, जो कोरोना वॉरियर्स देश के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, उसका हौसला बढ़ा के हमें उसको प्रोत्साहित करना है। दुनिया उसको कैसे प्रोत्साहित करे? उसके अकाउंट में इंसेंटिव डालते, लेकिन भी डॉक्टर हाजिर नहीं रहे, ड्यूटी पर नहीं आए। वहां सब कॉमर्स से चलता है, या सेवा से, संस्कार से चलता है। सेवा ये हमारा संस्कार है। दोस्तों देखो, जब लॉकडाउन लगा, ये देश में एक दिन की कमाई करके एक दिन खाने वाले करोड़ों लोग हैं। ये देश में एक महीना की कमाई करके एक महीने का के लिए खाने की व्यवस्था करने वाले करोड़ों लोग हैं। 1.5 महीने तक लॉकडाउन रहा, एक व्यक्ति को भूखे सोने की नौबत नहीं आई। क्यों? मोदी जी से हो सका इतना मोदी जी ने करा। एनजीओ, स्वैच्छिक संस्थाएं, महाजन, सब लोगों ने हो सका इतना उन्होंने करा। इतना ही नहीं, हम सब लोगों ने ध्यान रखा कि हमारे पड़ोस में कोई भूखे नहीं सोए हैं ना, तब जाके देश कोविड क्राइसिस के सामने लड़ पाया। दोस्तों, ये हमारा मॉडल है। हेल्थ में मुझे एक बार एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ, इंडियन था, वो मुझे मिलने आया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने जीडीपी के बहुत कम खर्च हेल्थ के पीछे कर रहे हो। अमेरिका 5% कर रहा है जीडीपी का खर्च हेल्थ के पीछे, ब्रिटेन 4.5 कर रहा है, इटली 6 कर रहा है। ऐसा करके उन्होंने दुनिया का वर्णन करा, और उन्होंने कहा कि आप 2% से कम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हमने भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई है, धीरे धीरे हम खर्च बढ़ा रहे हैं। आज हमारा आउट ऑफ पॉकेट खर्च 67% से घटकर 47% हो गया है, और अभी आगे कैसे कम हो उसके लिए हमने हमारी रणनीति बनाई है। लेकिन मैंने कहा कि आप जिस कंट्री की बात कर रहे हैं वह इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ ट्रीटमेंट है, केवल इंश्योरेंस लो, यहां मानवता बेस्ड चिकित्सा सेवाएं है। मैंने कहा कि यहां कोई भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, 50% 1, 2, 3, 4, 5 चैरिटी से चलने वाली अस्पताल मिलेगी। एक ऑपरेशन एक अस्पताल में 5 लाख में होगा, ये ऑपरेशन एक चैरिटी हॉस्पिटल में 50,000 में भी हो सकता है और फ्री में भी हो सकता है। ये व्यवस्था देश में है। एम्स के कोई नामांकित डॉक्टर हो, केवल एक बार कंसल्टिंग चार्ज वहां से छोड़ दे और उसका नाम और पॉपुलैरिटी बनी हो, बाहर जाके वो 1 लाख कंसल्टिंग चार्ज करे तो भी देने के लिए लोग तैयार हो। ऐसे कई डॉक्टर ने मैंने देखा है, वो केवल 1 रुपये की टोकन फी लेके जनता की सेवा करते रहते हैं। ये हमारा मॉडल है, और इसलिए हेल्थ सेक्टर इंडिया में जिस तरह से बदल रहा है, देश दोस्तों बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए देश के नागरिक स्वस्थ हुए बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। और इसलिए मोदी गवर्नमेंट की प्राथमिकता है देश के नागरिक को हेल्थ अफोर्डेबल मिले, हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ अफोर्डेबल हो, और इसलिए ही हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना चल रही है। मेडिकल कॉलेज बढ़ रही है, देश में मेडिकल की सीट बढ़ रही है, देश में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, हेल्थ सर्विसेज बढ़ रही है। आज के दिन में आयुष्मान भारत योजना के साथ जन औषधि केंद्रों के द्वारा सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही है, एम्स खुल रही है। जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में बदलाव हो रहा है, अवश्य
विकसित भारत बनाने में हमारी हेल्थ की व्यवस्थाएं बहुत सहयोगी और उपयोगी होगी। आप सब लोगों ने, मैं देख रहा था, बहुत धैर्य से मुझे सुना। उससे विश्वास बढ़ता है कि देश के लोग भी जागरूक होके हेल्थ सेक्टर में रुचि ले रहे हैं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। एएनआई की सारी टीम जिन्होंने ये डायलॉग आयोजित किया, उसको भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने इंडिया के हेल्थ सेक्टर को लेकर और इस सेक्टर में आए बेहतरीन बदलाव पर अपने विचार रखे हैं। यहाँ पर मंत्री जी से बहुत लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे सवालों के लिए तो समय नहीं है, लेकिन चंद सवाल हम जरूर ले सकते हैं। और जी, हेलो सर, मेरा नाम स्तुति बाफना है। मैं एएनआई में न्यूज़ प्रोड्यूसर हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने गेट बंद कर लिए थे और जो काम आए थे वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स थे। तो अब गवर्नमेंट ऐसा वापस क्या कर रही है कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो दोनों बैलेंस होके काम करे, क्योंकि हमने बहुत, अभी जो मोदी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत प्रमोट कर रही है। तो अब ऐसा क्या हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो चीजें बैलेंस हो जाए? उसमें दो बात है, हम उसको एक्शन से ठीक करें कि हम उसको हमारी भावना से ठीक करें। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों ने बंद कर दिया तो हम उसके सामने एक्शन भी कर सकते थे, उसको सजा भी कर सकते थे। लेकिन हमारा देश का मूल स्वभाव है, हम दर्दी को नारायण कहते हैं, दर्दी नारायण। जो दर्दी नारायण है तो मंदिर कौन है? हॉस्पिटल वो मंदिर है। हॉस्पिटल मंदिर है, दर्दी नारायण है तो डॉक्टर पुजारी है। ये भाव से हमने देखा है। आपने जो कहा, कई लोगों ने ऐसा करा होगा, लेकिन भी हम क्या बोलते हैं, डॉक्टरों ने, नर्स ने हमारे देश को बचा लिया, कहते हैं ना, क्योंकि उसकी माइनॉरिटी है और देश की जनता को डॉक्टर को देखने का दृष्टिकोण ये विश्वास से जुड़ा हुआ है। जो कॉमर्स होता ना दृष्टिकोण कौन हमारा, तो हमने तुरंत ही एक्शन ले लिया होता। वो मेरे ध्यान में नहीं था, ऐसा नहीं था, हमें पता ही था। लेकिन एक व्यक्ति ने डोर बंद कर दिया होगा तो 10 व्यक्तियों ने डोर खोला होगा। कई लोग कोविड में अपने जीव को, अपने स्वयं को जोखिम में डाल के प्राइवेट अस्पताल ने अपना डोर खोला था। इतना ही नहीं, कोई एनजीओ हो, कोई चैरिटी इंस्टीट्यूट हो, या तो कोई सेवाभावी संस्थाएं, या तो महाजन लोग हो, कंपनियां हो, उन्होंने स्वयं आके अपने प्राइवेट अस्पताल टेंट में चालू करी थी। ये देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको बेड ना मिला हो। और दुनिया को मैंने देखा है, जहां सिस्टम है ना, कॉल करते थे, हम कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है। ऐसे देश में एक सप्ताह तक पेशेंट का मृत्यु हो जाने तक वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। हमारे यहाँ कोई बेड के बिना नहीं रहे थे। ये दोस्तों भारत का मॉडल है। जी, सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम आयुषी अग्रवाल है। मैं एएनआई में न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। आई कवर फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी फॉर एएनआई। आपने वैक्सीन मैत्री का सर एग्जाम्पल दिया और किस तरह हमने कंट्रीज को, जब हमारे यहाँ पे वैक्सीन कम थी, किस तरह हमने उनको पहुँचाए। कुछ ऐसी भी कंट्रीज थी, अफ्रीकन कंट्रीज और ग्लोबल साउथ, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज ने थोड़ा इग्नोर किया, वहाँ पे हमने वैक्सीन पहुँचवाई। आई जस्ट वॉन्ट टू नो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या रहा जब उन्होंने आपको कुछ फीडबैक दिया होगा उन कंट्रीज को जिसको वेस्ट ने इग्नोर किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। कई डेवलप्ड कंट्री वैक्सीन का स्टोर कर रही थी। पेंडेमिक आगे बढ़ेगा तो हमारे देश में 3 टाइम 4 टाइम वैक्सीन हो, तब तक हमें एक्सपोर्ट नहीं देना। मैं भी यहाँ बैन कर सकता था, एक्सपोर्ट नहीं देना है, लेकिन हमारा सिद्धांत अलग था। हमने सोचा कि नीडी कंट्री को कौन मदद करेगा। मोदी जी ने कहा हम करेंगे। हम वैक्सीन मैत्री के तहत
दुनिया को मदद करने लगे। नतीजा ये निकला, दुनिया को इतना अच्छा लग रहा था, एक कंट्री में उस वक्त मोदी जी को कॉल आते थे, हमें वैक्सीन चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए। मुझे भी हेल्थ मिनिस्टर कॉल करते थे और इतना हर दिन 10-15 हेल्थ मिनिस्टर, 20 हेल्थ मिनिस्टर से बात होती थी और कई बार मीटिंग हुआ करती थी, कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मीटिंग हुआ करती थी। तो मैं उस वक्त बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता था, चिंता मत करिए, हम आपको मेडिसिन पहुंचाएंगे, चिंता मत करिए, हम आपको वैक्सीन पहुंचाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन दिया है, कैसे प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना, कैसे करना, हम देख रहे हैं। एक में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर दोस्तों हमारे लोग बैठे थे, उसके साथ तालमेल करके उसको क्या क्या चीजें चाहिए, उसको वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत चीजें चाहिए, कई चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, तो इंपोर्ट पर, उसका रॉ मटेरियल का इंपोर्ट पर भी बांध था। तो कहां कब विदेश मंत्री जी का इंटरवेंशन कराना है, कहां प्रधानमंत्री जी का इंटरवेंशन कराना है, हम करते थे, मॉनिटर करते थे और वैक्सीन बना के दुनिया को बेचते थे। उस वक्त जो आपने किया ना कि उसका प्रतिभाव कैसा था, 150 कंट्री में से 76 कंट्री ने, किसी ने ट्वीट करके मोदी जी को थैंक यू कहा, भारत को थैंक यू कहा, किसी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी को कॉल करके मोदी जी को थैंक यू कहा कि आपने हमें मेडिसिन दी, आपने हमने वैक्सीन दी, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते। जब मैं विदेश प्रवास करता हूं तब, या तो भारत के कोई मंत्री विदेश प्रवास करते हैं तब, जब दुनिया के साथ बायलैटरल टॉक होती है, एक दूसरे लीडर बात करते हैं, तो पहले शुरुआत वहां से होती है कि हम इंडिया को थैंक यू कहते हैं कि आपने हमारी क्राइसिस की स्थिति में वैक्सीन उपलब्ध कराया था, मेडिसिन उपलब्ध कराई थी। 76 कंट्री ने ट्वीट करके या तो प्रत्यक्ष कॉल करके इंडिया को थैंक यू कहा। इतना ही नहीं, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने तो ट्वीट करा था कि हनुमान जी संजीवनी लेके लक्ष्मण जी को बचाने के लिए गए थे, वैसे भारत से जो प्लेन आ रहा है हमारे देश के नागरिकों के लिए संजीवनी लेके आ रहा है, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट करा। ये दुनिया का प्रतिभाव था। हेलो सर। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं होगा। ये कुछ सवाल हम ले लेते हैं। टोटल हाथ खड़ा करो तो कितने लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मेरे पास भी है पर मैं को मौका देना 16 चाहूंगी। है। सभी को तो मैं जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन लिख के मुझे अवश्य दीजिए। मैं आपको राइटिंग में भी रिप्लाई तो दे ही दूंगा, ताकि आपके मन में कोई प्रश्न हो उसका समाधान करना मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप उसमें से कई ANI से जुड़े हुए होंगे, कोई एक्सपर्ट होंगे, कोई स्टूडेंट होंगे, तो आपको डे टू डे उपयोगी होगा। जी बताएं। आई एम डॉक्टर शारदा, आई एम फ्रॉम फोडा। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जो रेसिडेंट्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है, सिक्योरिटी के लिए हमारे भारत सरकार बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी आगे लेके जा रहा है चीजें, और सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा इशू है, जो कि आगे का क्या रोड मैप रहेगा सिक्योरिटी को लेके, आप अगर। डॉक्टर की सिक्योरिटी? जी सर, रेसिडेंट डॉक्टर्स। रेसिडेंट? जी सर। हाँ, मतलब डॉक्टर की सिक्योरिटी। ये जो अभी 3 नए कानून आए हैं, ये 3 कानून में भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी डॉक्टर को प्रोटेक्शन देने की बात उसमें कही है। हमने ये 3 न्याय कानून है ताकि सभी को न्याय मिलना चाहिए, अनजस्टिस किसी को भी नहीं होना चाहिए। और इंडियन पिनल कोड में भी था और उसमें उसको थोड़ा करेक्ट करके भी लिया है, ताकि कोई डॉक्टर सेवा करता हो। और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, कोई डॉक्टर किसी को मारने के लिए तो, या तो किसी का जीव जाए उसके लिए तो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, उसको तो बचाना ही है किसी को। लेकिन भी कई बार मानवीय भूल भी हो जाती, कितना भी ध्यान रखे तो भी व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में भी ये देश का मूल स्वभाव है। देखो 13 लाख डॉक्टर है, घटना ऐसी कभी कभी हो जाती, नहीं होनी चाहिए कभी भी, लेकिन भी कभी हो जाती, उसमें डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए हमने भारतीय न्याय संहिता में 3 प्रावधान करा है, जो डॉक्टर को सेफ्टी देता है, डॉक्टर को सलामती देता है और उसको सिक्योरिटी देता है।
वायलेंस के सामने। थैंक यू। आखिरी सवाल हम ले सकते हैं, 2-3 मोर। जी बताएं। गुड आफ्टरनून सर, आई एम डॉक्टर रजत गंगवार फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। सर, पिछले कुछ सालों में हमारे देश में काफी मेडिकल कॉलेजेस नए बने हैं, काफी डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, काफी रेजिडेंट डॉक्टर्स भी एंड एमबीबीएस ग्रेजुएट्स भी पास आ रहे हैं। तो यंग डॉक्टर्स के लिए सर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में क्या कर रही है सर? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी 1 लाख सीट हुई है, अभी नई 1 लाख सीट जोड़नी है। देश में आज हमारे यूथ यहां से चाइना जाते हैं, रशिया जाते हैं, फिलीपाइंस जाते हैं, विविध कंट्री में डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं। उसकी जगह पे उसको यहाँ ही अपॉर्चुनिटी मिले। अभी आपका क्वेश्चंस का रिप्लाई, यहाँ जॉब का क्या होगा, हम आपसे एक स्टेप एडवांस है। कोई डॉक्टर को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 2 सेक्टर आपके लिए बहुत बड़ा ओपन हो रहा। एक, इंडिया के डॉक्टर की विश्व में डिमांड और स्टाफ। अभी मैं 6 महीने पहले जापान गया था, उन्होंने कहा कि हमें 5000 नर्स चाहिए, 5000 नर्स चाहिए, और वो जापानीज बोले तो बहुत अच्छा है, और उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट में से मिले तो बहुत अच्छा है। मैंने तुरंत ही वहां की सरकारी एजेंसी को लेके मैं यहाँ आया। नॉर्थ ईस्ट में 4 कॉलेज में जापानीज लैंग्वेज सिखाना चालू करा। 60 बच्चे जापानीज लैंग्वेज सीख के नर्स बन के तैयार हो गए हैं। उसको लेके कॉनराड संगमा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जापान जा रहे हैं। मैंने कहा आप तुरंत ही व्यवस्था करो, मैं आपको सी ऑफ करने के लिए आऊंगा। ये अपॉर्चुनिटी है। आज आप केरला में जाओ, वो इंडस्ट्रीज नहीं है केरला में, लेकिन सबसे ज्यादा परचेज पावर केरला में है, क्योंकि वहां डॉलर और दिरहम में पैसा आता है। वैसे दुनिया के लिए भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है। उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी देश में हमने हील इन इंडिया इनिशिएटिव लिया है। दुनिया आइए इंडिया में ट्रीटमेंट करवाइए। आप अपनी प्राइवेट अस्पताल खोलिए, आयुष्मान भारत योजना के साथ एफिलेट हुए, हम आपको एश्योर काम दे देंगे। मैं बिजनेस दे देंगे ऐसा नहीं कहूंगा, एश्योर काम देंगे, ताकि आपके अस्पताल भी चले, आपकी आजीविका भी चले। आप इस टाइप की व्यवस्था खड़ी करने चाहते हो तो आप हील इन इंडिया में रजिस्टर हो जाओ। दुनिया के लोग आपका अप्रोच करेंगे। आने वाले दिनों में हेल्थ टूरिज्म के लिए इंडिया में जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको एनकेज करना है। आपको अंदाज नहीं है, आज ट्रीटमेंट के लिए कई सिस्टम को दुरुस्त करना है, हो रही है, उसको ट्रीटमेंट इंडिया में कराना है। आज मेरे कई रिलेटिव्स यूएसए में रहते हैं, थोड़ी सी भी बीमारी होती है ना तो कहते चलो इंडिया में चक्कर लगा के आते हैं, ट्रीटमेंट करा के आएंगे। टीथ निकालना है ना तो भी वो सोचते हैं कि चलो 1 सप्ताह रुक जाओ, मुझे अगले सप्ताह जाना ही है ना, तो वहां जाके ट्रीटमेंट करा के आएंगे, निकाल के आएंगे। दोस्तों, ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल चिंता मत करिए। डॉक्टर की पोजीशन, डॉक्टर का स्थान, अभी 2 लाख सीट बढ़े तब तक कोई चिंता का कारण नहीं। तनुजा जी इस पर कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी नहीं, मैं माननीय मंत्री जी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को बस धन्यवाद करना चाहती हूँ, और एक और पहल में बस सभी के सामने रखना चाहती हूँ कि जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल में या अन्य नए सभी एम्स में जो एक आयुष का वर्टिकल खुला है, आयुष का कॉलेज एक यूनिट खुला है, डिपार्टमेंट है, पंचकर्मा वेलनेस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, तो वो माननीय मंत्री जी के इंटरवेंशन से उनके आग्रह से खुले हैं। सो पीपल सेंट्रिक इंटीग्रेशन की जो लोगों को हर चीज जो हमारा इंडिया का मेडिकल प्लुरालिज्म है, आयुष की सिस्टम और एलोपैथी की, सभी को एक अम्ब्रेला के नीचे मिले, मतलब फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इज इंटीग्रेशन, वो उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि अभी हील इन इंडिया में जो एक वेलनेस टूरिज्म है और आपने जो मॉड्यूल बनाए हैं उसमें भी आयुष का अंतर्भाव किया है, और एज अ वन नेशन वन हेल्थ के अंतर्गत वो आयुष को भी साथ में लेके चल रहे हैं। ये पहल मैं
सभी के सामने रखना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। अक्सर नमस्कार सर, मेरा नाम पवन है, मैं एनआई कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से हूँ। जैसे हमारे पास एविएशन में डीजीसीए है, किसी की मौत हो जाती है, व्हील चेयर नहीं मिलता है, डीजीसीए उस पर फाइट करती है, हमारे पास उस तरह की खबरें आती है। लेकिन हेल्थ में इस तरह की खबरें हमारे पास क्यों नहीं आती है कि कोई हॉस्पिटल कुछ नेग्लिजेंस करता है, किसी की मौत हो जाती है, तो आपके पास डीजीसीए कब आएगा? हमारे यहाँ भी हेल्थ में भी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज है। कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना बनती है, हेल्थ इंटेलिजेंस के द्वारा उसके पास रिपोर्ट आती है, उसका एनालिसिस होता है और एक्शन भी होता है। लेकिन हेल्थ ये स्टेट सब्जेक्ट होने से डायरेक्ट एक्शन लेने का हमारा अधिकार नहीं है, तो हम स्टेट को उसको फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए दिखता नहीं है। एविएशन है तो डायरेक्टर जनरल एविएशन यहाँ से एक्शन करता है तो दिखता है हमें। वैसे में शिपिंग मिनिस्टर था तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग होता है, वो वहां से एक्शन करता है तो सारे देश की शिप पर उसको इफेक्ट आती है सीधी। यहाँ हम कोई एक्शन करते हैं तो हमें स्टेट को रिकमेंडेड करना पड़ता है कि आप ये टाइप का एक्शन उसके ऊपर करो, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन करती है, इसलिए दिखता नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था MBBS MD चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से करके 10 साल अमेरिका में रहा था सर। लेकिन दिल में ख्वाहिश थी कि बच्चों की सेवा यहाँ करनी है, तो 25 साल से यहाँ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। और जिस समय आपने कोविड में काम किया, हम लोगों ने भी बीच में NGOs ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ 2% इम्यूनाइजेशन था 195 या 100% लेके आए थ्रू सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन। सर आप लोगों ने इतना काम किया है, गवर्नमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मेरे लिए आपसे दो चीजों पे आपका ध्यान जाना चाहिए। एक तो स्ट्रीट बेस्ड चिल्ड्रन जिनकी हेल्थ और राइट्स कहीं दिखती नहीं है। कई हमारी कंट्री में अभी भी 20 मिलियन बच्चे हैं सर, उनके लिए हम कैसे उनके साथ कहें एक्सेस कैसे दें, एक तो ये बात है। और दूसरी होती है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, वो बहुत मार्जिनलाइज होते हैं सर। उनके लिए हमारे पास इतने, हम जाते हैं फील्ड में, मैं एक मोबाइल हेल्थ वैन चलाता हूँ, कम से कम 10 से 15% बच्चा है जो डिसेबल्ड है, उसको हेल्थ की सुविधाएं के अलावा उसके राइट्स चाहिए, उसके अधिकार चाहिए। उसके लिए कैसे हम जल्दी से कोई ऑनलाइन पोर्टल या किसी तरह उनकी, मैंने नेशनल कमीशन में भी राइट्स में भी बात करी थी, उन्होंने कहा था हम पोर्टल बनाएंगे, लेकिन 3 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं सर। तो आपसे ये बात करनी है कि जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिसेबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्ट्रीट बेस्ड चिल्ड्रन शुड बी रेस्पेक्टेड। अच्छा सुझाव है, एक बार आप लिख के भी मुझे सुझाव दीजिए कि उसमें क्या करना चाहिए, तो उसके पर एक्शन करने में हमें सुविधा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त अब कम लास्ट है। खड़े ही हो गए तो पूछो। बाकी लोग अपने सवाल लिख के दे सकते हैं मंत्री जी को, जैसे कि उन्होंने कहा है। Hi sir, I am Rajneesh. I am assistant editor here in ANI. I have 2 questions. First of all, when we comes up with the medicine, the vaccine, there was misconception among people that when any such kind of injection medicines comes in the field, it takes almost 2 to 3 years minimum. And we came with this. We started medication at the moment across world. My question is, there was misconception among people that it might side affect some people. Was there any planning for in health ministry to deal with such kind of issues if we faced at that time? And there is still a misconception that there are many people who suffer from heart attack, such kind of ailment. So just clear out all these things. उसमें 2 विषय, एक जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाती है और डिसीजन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो डेटाबेस होता है। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन गई, एक मिस परसेप्शन बनाने की उस वक्त कोशिश की गई कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, तो फिर क्वेश्चंस रखा, पॉलिटिकल क्वेश्चंस था कि अच्छी होती तो मोदी नहीं लगाते। तो फिर मोदी ने कहा कि भाई पहले मेरे देश के कोरोना वॉरियर्स को लगेगी, बाद में 60 अबव को लगेगी,
और बाद 60 अबव कोमोर्बिड को लगेगी, बाद में 60 अबव जनरल को लगेगी और बाद में सभी को लगेगी। तो मोदी की तीसरी श्रेणी में बारी आई 60 अबव जनरल को, और उन्होंने उस वक्त लगाया। तो फिर एक क्वेश्चन आया, मिस परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि मोदी ने पहले क्यों लगा दिया, अभी देश को लगाना बाकी है। पहले की अच्छी होती तो मोदी नहीं लगाता। फिर कहने लगे कि मोदी ने क्यों लगाया, अभी तो देश को बाकी है। फिर बात आई कोविड हो गया, देश में 220 करोड़ डोज लग गया। फिर अभी कई बार लोग बोलते हैं, और उस वक्त भी बोलते थे, आज बोलने लगते उसकी साइड इफेक्ट होगी। आज किसी को स्ट्रोक आता है तो कहते हैं कि एक कोविड वैक्सीन की वजह से स्ट्रोक आता है। आईसीएमआर ने एक डिटेल स्टडी उसके ऊपर कर लिया। हार्ट अटैक के लिए वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा, हार्ट अटैक होने का कई रीजन होता है। हमारी लाइफस्टाइल एक रीजन है, टोबैको एक रीजन है, ज्यादा लिकर कंज्यूमिंग एक रीजन है। ऐसे कई टाइप के रीजन अभी देखने में आ रहा है। साइंटिफिक उसके ऊपर अभ्यास चल रहा है, बट ये होता रहता है। कई बार कई मिस इन्फॉर्मेशन जनता में चली जाती है, उसमें कई बार शॉर्ट टाइम के लिए लोगों का परसेप्शन बनता है। लेकिन हम जो भी डिसीजन करते हैं, मेरा तो बहुत आग्रह रहता है, डेटा बेच करो। साइंटिफिक मनसुख मांडविया मिनिस्टर है, बट मैं साइंटिस्ट नहीं, तो मेरा डिसीजन साइंटिफिक होना चाहिए। कोविड के दरमियान आपने देखा होगा, हम नंबर ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे, और ये टेक्निकल टीम ही डिसीजन लेती थी। हम उसको स्वीकृत करते थे, लेकिन डिसीजन उसका होता था, हमारा डिसीजन नहीं होता था। धन्यवाद। प्रिया, इसी के साथ मैं संजीव जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर कि वो माननीय मंत्री जी का स्वागत करें एएनआई की तरफ से। एक बार फिर से एएनआई की तरफ से हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना कीमती वक्त निकाला और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। अच्छी से दिमाग शांत रखें। डायलॉग्स नेविगेटिंग इंडियाज हेल्थ सेक्टर में अभी बहुत कुछ बाकी है, चर्चाएं बाकी हैं। हमारे चीफ गेस्ट माननीय मंत्री जी श्री मनसुख मांडविया ने बहुत सारे सवालों के बहुत विस्तृत जवाब दिए और ये भी साफ किया कि भारतीय वैक्सीन्स का साइड इफेक्ट्स नहीं है, जैसा कि सवाल में पूछा गया था। एक मुद्दा जो कि आजकल हेल्थ को लेकर हम सब के बीच है, वो है लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफस्टाइल डिजीजेस इंडिया में बहुत बढ़ रही हैं। इंडिया एक यंग कंट्री है, दुनिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन इंडिया में है और अगले 3 दशकों तक इंडिया का ये एडवांटेज रहने वाला है कि यहाँ सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन होगी। लेकिन इस यंग पॉपुलेशन के बीच लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं, मोटापा, ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज बढ़ रही है, हाइपरटेंशन बढ़ रही है। तो कैसे इन मुद्दों से लड़ा जाए, कैसे इनसे जूझा जाए, इस पर हमारा अगला पैनल डिस्कशन होने वाला है और उसके लिए हमारे साथ एक डिस्टिंग्विश पैनल जुड़ रहा है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संदीप नायर, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड एचओडी चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस बीएलके हॉस्पिटल, डॉक्टर धीरेन, सीनियर पीडियाट्रिशियन, सर गंगाराम हॉस्पिटल,
Dr. Neeta Radhakrishnan, Associate Professor and HOD, Department of Pediatric Hematology Oncology, PGICH. Dr. Suresh Kumar, Medical Director, LNJP Hospital. Please come from. Dr. Sandeep Nair, I want to begin with you. India is the envy of the world for the demographics that we have. We have the youngest population. It's going to be so for a few decades now. How to deal with lifestyle diseases amongst the young? यहाँ पर बहुत सारे युवा लोग हैं हमारे बीच. मुझे यकीन है इनकी बहुत दिलचस्पी होगी इसमें. Yeah, thank you for asking me and having me here. देखिए, over a period of time, बहुत सारी changes आई हैं जब से हम grow हुए हैं और अब तक आए. हमें याद है when we used to go out, हमें बोला जाता था कि अब घर आ जाओ, बहुत खेल लिया. But now the things are opposite. The youngsters are staying home. वो अपने घर में ही रह के अगर क्रिकेट खेलना है तो वीडियो पे हो रहा है या कंप्यूटर्स पे हो रहा है, and they are hardly going out. स्पेस भी नहीं रह गई है. हम हमारे पास काफी पार्क्स होते हैं, घरों में पार्क्स होते हैं, अब घर के ऊपर है. तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस लाइफ हो गई को बहुत ज्यादा, अनड्यू स्ट्रेस, thinking of too much of themselves, and many of the corporate people and the who going to say smoking and alcohol has really increased to a lot of extent. काफी ज्यादा इस तरह के behaviors हो गए हैं. So lack of exercise, lack of going outside, lack of intermingling with each other, and then unfortunately जब से कोविड आया, ये वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट मेरे को कभी समझ नहीं आया. और स्पेशली इवन द एजुकेशन फ्रॉम होम, द कॉलेजेस वगैरह बंद थे, स्कूल्स बंद थे, और बच्चों में जो मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम शुरू हो गई वो काफ़ी ज़्यादा हुई. सो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा चेंज ऑफ, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड फॉर द गुड, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गलत तरफ चली गई. हमारा एक्सरसाइज, हमारा वे ऑफ स्टाइल, हमारा लिविंग स्टाइल, हमारा इंटरमिंगलिंग. एक ज़माना था हमारे को पूरा मोहल्ला पता था कौन कहाँ रह रहा है, और अब साथ वाले घर में कौन रह रहा है हमें नहीं मालूम. जस्ट इंटरेक्शन और प्लेइंग इज नॉट देयर. सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. एक हेल्दी फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आजकल सारा फास्ट फूड का ज़माना आ गया है कि जस्ट एक फ़ोन पे आपके घर में डिलीवर हो जाता है. सो ये सारी चीज़ें मिलाकर अब हमारा लिविंग इज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स, एंड द थिंग्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट इज हम अपने के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ अब टाइम भी कम व्यतीत कर रहे हैं, जो जहाँ से हमें अच्छी इम्पोर्टेंस हमारे को वैल्यूज़ मिलती थी. सो ये सब चीज़ें मिलके आई थिंक कुछ हमारे को लाइफस्टाइल अपनी जोर, खासकर जो हमारे अर्बन है, हमें और अच्छे से करनी है. हमें मोर ऑफ एक्सरसाइज, हेल्दी फूड एंड सब कुछ मिला के अगर हो तो बेटर रहेगा. लाइफस्टाइल डिजीजेस से निपटने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने की जरूरत है. डॉक्टर सुरेश कुमार, आजकल बहुत सारे यंग लोगों में कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं. अभी एक सवाल भी था, क्या ये वैक्सीनेशन से तो नहीं जुड़ा है? आपका क्या ओपिनियन है? First of all, thank you, ANI, for inviting me for this esteemed panel. And I think the health is the core subject nowadays. We know that we have a huge population of 140 crores. We have around 100 million, means around 10 crore diabetic and pre-diabetic in the country. We have a highest number of the hypertensive population, around 22%. We have large number of kidney disease patients, COPD patients, cancer patients, and the young. You are asking, the heart rate is very common nowadays in the young population. There are multiple reasons for that. सबसे महत्वपूर्ण तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया लाइफस्टाइल डिजीज है, their lack of exercise, their high cholesterol level, they have a very bad eating habits because of the pizzas and fast food. They have the truncal obesity, they have the visceral fat, they have the multiple risk factors like smoking. Smoking is very, very common in the young generation. So smoking, sedentary lifestyle, lack of exercise, coupled with your genetic factors, because if you see that heart disease
they are 20 times more if you compare with the Japanese population. In India, heart diseases per se are 20 times much more lethal, much more mortality than Japan, 6 times more than Chinese, 5 times more than the American whites. So in all ethnic group, Indian population is highly vulnerable. सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक इंडिया में प्रीमेच्योरली होते हैं, अर्ली एज ऑनसेट होता है, और उसका जो प्रोफाइल है वो भिन्न है डेवलप्ड कंट्रीज से, क्योंकि हमारा जो खान पान है और हमारी जो हैबिट्स हैं वो तेजी से बदल रही हैं. दिस इज द मेन कॉज दैट most of these people are having lot of saturated fat, and they are in a bad habit like smoking, and excessive alcohol consumption is lack also of exercise. Then coupled with the stress is the major. You are in the corporate sector, you have to achieve your targets. So आपका sleep pattern आपका different हो गया है, आपका जो body है वो adapt नहीं कर पा रहा. Then you have the genetic makeup. So these are multiple reasons responsible for the premature coronary artery disease in India. That is the main thing. Well put. Thank you so much. Now I would like to come to Dr. Neeta. Dr. Neeta, पहले एक वक्त था जब बच्चे बाहर खेलने जाते थे, खेल कूद करते थे, एक्टिविटी होती थी, दौड़ते थे. अब ज्यादातर वक्त या बहुत कम वक्त बाहर निकलता है, ज्यादातर वक्त घर में बीतता है, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने. How is this affecting and causing lifestyle diseases amongst children and youth? Yeah, it's not a problem with urban communities anymore. The penetrance of digital media and penetrance of smartphones is there to every level of the country now, every tier of the country now. कि अभी बच्चों को बाहर जाना, खेलना, everything is coming down. And हमें travel करने के लिए भी it's so easy for us to travel. We have our own cars or our own vehicles. So now the dependence on public transport or having to walk somewhere to get into to reach a place is actually very less in India. When we go abroad, we realize that people actually walk like kilometers to work or maybe cycle to work. तो वो सारा कुछ हमारे country में होता ही नहीं आजकल. And that I think even in children, it's a system, and we are starting these lifestyle issues very, very early in life. So couple of months back, we analyzed our cancer survivors. जो हमारे institute में treat करके सर्वाइव हुए कैंसर पेशेंट्स का आज का लाइफस्टाइल हमने असेस किया. तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट उसमें भी अराउंड 30% पेशेंट्स आर आइदर ओवरवेट और ओबीस, एंड देर आर फैमिलीज हु आर स्टिल स्मोकिंग आफ्टर हैविंग हैड अ कैंसर इन द फैमिली. सो वन वुड थिंक कि कैंसर हो गया तो अभी तो एक्चुअली लाइफस्टाइल वुड इम्प्रूव, बट इट्स नॉट द केस. So a lot of adolescent cancer survivors have taken up smoking or alcohol. So these are issues I think it's lack of awareness at some extent, but it's also the ease at which these things are available to us as a community. And to add to all what has been told, I think there is a whole issue about food being not regulated, and so the preservatives in the food, coloring agents, so all that is also adding to the way these metabolic diseases are coming up in our community. I also want to touch upon diabetes. India has been called the diabetes capital of the world, and it is increasingly being found amongst the youngsters. Dr. Dhiren, your thoughts on that? मैं डॉक्टर सुरेश की बात से स्टार्ट करूंगा. हमें पूर्वजों ने शायद थोड़े जीन्स दिए हैं वल्नरेबल, बट हमारे पूर्वजों ने जो डाइट दी थी वो हमने अगर आप लेटेस्ट थ्योरी की तरफ जाओगे, विच विल गिव यू इनसाइट, आप एक तरह से सब समराइज कर सकते हैं. दो थ्योरी है, डिसबायोसिस एंड हाइजीन हाइपोथेसिस. डिसबायोसिस एक कॉन्सेप्ट है. मैं साइकोलॉजिकल या मिथ्स की बात, साइंस. हमारे गट में दो तरह के बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड. आप इमेजिन नहीं करोगे जो आप खाना आपके सामने प्लेट्स में है, जो केक्स हैं इस तरह के जिसके अंदर सैचुरेटेड, वो भी खराब तरह के फैटी एसिड्स में है, जिनको बार बार आप बॉयल करते हो या फ्राई करते हो. ट्रांस फैट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लो प्रोटीन डाइट, लो फाइबर डाइट, ये सारी तरह के स्ट्रेसेस इंड्यूस करते हैं गट के अंदर. खराब बैक्टीरिया को ओवर रेजुमिनेट करते हैं और गुड बैक्टीरिया को डाउन. गुड बैक्टीरिया आपको लगेगा सर स्ट्रेस से क्या लिंक है, ये तो पेट में, हमारी पेट की डिजीज. यू वॉन्ट इमेजिन, गुड बैक्टीरिया इज
एंटी इन्फ्लेमेशन कम करती है पूरी बॉडी, ना केवल हार्ट में करती। अगर आप डिजीजेस की बात करो, ओबेसिटी हो, हाई फैट, ये सब प्रो इन्फ्लेमेटरी, स्ट्रेस प्रो इन्फ्लेमेटरी। गुड बैक्टीरिया इंड्यूसेस लेस स्ट्रेस, लेस एंजाइटी, लेस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, लेस एस्थमा, एंड इमेजिन नहीं करोगे आजकल मैक्सिमम एलर्जी, लेस एलर्जी। लीव साइड भूल जाओ आप पेट की भी। ऑफ कोर्स अगर आपके पास गुड बैक्टीरिया है तो आपको पेट की प्रॉब्लम कम हो। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBS, ये सारी लिंक हैं डिसबायो। तो ये डिसबायोसिस थ्योरी है आपकी सारी डाइट से लिंक, आपकी लो एक्सरसाइज और आपकी शुगर डाइट्स, इन सब से लिंक है। दूसरा है हाइजीन हाइपोथेसिस। इस समय अगर हम बैठे हुए हैं बिल्कुल क्लीन स्वेंकी 5 स्टार होटल में बैठे हैं, एक्चुअल में यही हमारी प्रॉब्लम है और ये हमारे पूर्वजों ने नहीं दिया। हमारे पूर्वजों ने दिया था एक हट टाइप की या थोड़ा सा मिडिल क्लास। मैं भी मिडिल क्लास से हूँ। हमारे याद है कि वो रजाइयाँ फटी होती थी, रुई बाहर निकल रही होती थी। आजकल हर चीज बिल्कुल क्लीन एंड स्वेंकी है। सीजेरियन डिलीवरीज होने लगी, नॉर्मल डिलीवरीज कम हो गई। गंदगी में खेलना बंद कर दिया, जैसे नैयर सर कहे थे, बिल्कुल ठीक है, गंदगी में खेलना। तो हमारे गट में हमारी माइक्रोबायोटा चेंज हो गया। माइक्रोबायोटा चेंज हो गया, दो तरह की इन्फ्लेमेशन होती है, TH1, TH2। बॉडी इज मूविंग टूवर्ड्स TH2 जो एलर्जीज प्रमोट करती है। तो अगर नटशेल में हम सब चीज को समराइज करें तो प्रोबेबली लाइफस्टाइल डिजीज का क्योर बिल्कुल भी नहीं है। इट इज ऑल प्रिवेंशन। मीन प्रिवेंशन इज द क्योर। अगर हमने आज नहीं किया, वी विल एंड अप इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट में 1 मिनट लेना चाहूंगा। मैं अपने डाइटिशियन से बात कर रहा था कि यहाँ आने से पहले मेरे को लगा मैं भी अपडेट कर लूं। उसने जो मेरे को कॉन्सेप्ट बताया, कहता सर डिसबायोसिस, अगर मैं साउथ इंडियन हूँ और मैं आज गेहूं खाना शुरू कर दूं या मैं कॉर्नफ्लेक्स खाना शुरू कर दूं, क्योंकि वेस्टर्न बड़ा अच्छा सा कॉर्नफ्लेक्स है, 700 रुपए का मिलता है, तो आपको 700 रुपीज को आपको ऐसा लगता है जैसे बड़ी अच्छी चीज अंदर जा रही है, क्योंकि इससे कॉस्टली। ये एक मेंटल फ्रेम जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। कहता है कि सर उसकी बायोटा जो गट है वो साउथ इंडियन फूड के हिसाब से उसके पूर्वजों ने दी है। तो एक्चुअल में आप डिसबायोसिस प्रमोट कर रहे हो, और डिसबायोसिस प्रमोट कर रहे हो ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीजेस विच वी आर गोइंग टू टॉक, राइट? सो थिंग्स आर डिफरेंट। हमें वही खाना चाहिए जो हमारे पूर्वज खाते थे, उसी तरीके से खाना चाहिए जैसे हमारे पूर्वज खाते थे। तो एक्चुअल में इफ वी स्टार्ट फॉलोइंग द नेचर, हम नेचर के पास अगर जाना शुरू कर दें तो हमारी डिजीजेस ऑलरेडी प्रिवेंटिव मोड पे आ जाएगी। नेचर के साथ मतलब नेचुरल फूड्स को प्रेफर करें, एंशिएंट ग्रेन्स को प्रेफर करें। मैं मेंटल वेलबींग पर भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी एक लाइफस्टाइल इशू है आज के दौर में। डॉक्टर नायर, स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर जरूर है, लेकिन इस मुद्दे पर कितनी अवेयरनेस है? एक स्टिग्मा भी रहता है कि किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर या किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर आप हेल्प लें। इस पर आप क्या सोचते हैं? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने पिक किया है। एंड यू नो इट्स नॉट ओनली एडल्ट्स, इवन बच्चों में इतना ज्यादा आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। जैसे मैंने बोला, वी वर लकी, वी आर स्टिल लकी कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, और बच्चों को हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स टाइम देते। तो जॉइंट फैमिली में यू नो द अपब्रिंगिंग इज सो गुड इफ यू रियली आस्क। आजकल न्यूक्लियर फैमिली होगी, बच्चा अकेला घर में है। यहाँ भी आप बच्चे भी अब 2 या 1 है, एक स्कूल चला गया तो अकेला है, डोंट नो किससे बात कर रहे हो, तो माता पिता दोनों काम कर रहे हैं। अगर कोई हेल्प है, कोई नैनी और समथिंग है, तो उसकी क्या मेंटेलिटी है वो ये पिकअप करेगा। ही विल पिक अप द वर्च्यूज एंड वैल्यूज फ्रॉम देम रादर देन द ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि अब वो न्यूक्लियर फैमिली की तरह चले गए। कोविड ने तो जो बुरा किया हमको मालूम ही है, क्योंकि स्कूल जब बंद हो गया, स्कूल इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस जहां जाके बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है। हम सिर्फ लर्निंग एजुकेशन के लिए नहीं जाते, हम लर्निंग एज अ होल जाते हैं। तो एजुकेशन इज नॉट ओनली स्टडीज, एज अ होल ना एक होलिस्टिक अप्रोच चलती है हमारी, वो काफी कम होगी कोविड के टाइम। वैसे भी अब कुछ ऐसे स्कूल्स आ गए हैं जी हम सीधा एडमिशन देंगे, जो डमी स्कूल्स और ये चीजें विच शुड बी कंडेम्ड टू ऑल थिंग। इसके कारण काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और साइकेट्रिक प्रॉब्लम और दिस थिंग हैज कम टू द चिल्ड्रन। नाउ द पेरेंट्स आर बिट एप्रीहेंसिव टू टेक देम टू द
psychiatrist or a, you can say even for that matter, any helper or counselor, whatever you may call them. क्योंकि एक concept है यार, कहीं मेरा बच्चा कहीं mentally problem तो नहीं हो, acceptance नहीं, you know, but it's not that. Little bit of help and little bit of, you know, professional help definitely helps them a lot. Like I said, because unfortunately, if we are not able to spend time onto children, which should be condemned, we should spend as much as time to the children. हम बच्चों के साथ रहना चाहिए. तो अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं. बच्चों के बारे में डॉक्टर धीरेन ज्यादा बताएं, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन इन इंडिया. हम अगर बड़ों की बात भी करें, बच्चों की करें, तो क्योंकि बात ही नहीं हो रही है. मतलब आजकल जैसे मैंने कहा, मैं साथ वाले घर में कौन है नहीं मालूम था. पहले एक शाम को सब इकट्ठे हो जाते थे, इंटरैक्ट करते थे, चाहे कुछ जिसको हम कहते थे चुगली भी करते थे, बट एटलीस्ट यू नो you used to get the few things. एक humor होता था. You used to vent out. Yeah, you have to vent out. You have to vent out. Of course, मैं अपनी बात किसी के आगे तो रख लूंगा, नहीं करूंगा तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोड होगा. You know, that is going to explode. उसे डायनामाइट. सो कहीं ना कहीं छोटा छोटा वेंट करके, एंड देन यू नो कितनी बार तो आपको साथ वाला हेल्प कर देता था, आपका फ्रेंड या आपके फादर ही या मदर ही हेल्प कर देगी हाउ टू गेट ओवर इट. इफ यू आर टू स्केयर टू टॉक टू माई फादर, इफ आई एम टू स्केयर टू टॉक टू माई मदर और माई, सो मैं कहाँ करूंगा, लोग तो है नहीं. So at least take some professional help if at all is required, because definitely they are going to help you out. So the concept to all parents, all my friends, is that in case you think you need help, so please go for it. कोई संकोच करने की बात नहीं है. There's nothing you can get over it. You can't get over it. You can easily get over all these things. सिर्फ एक आपको डायरेक्शन चाहिए. कभी कभी भटक जाते हैं, हम सब भटक जाते हैं. एक बार डायरेक्शन होगी तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वॉक ऑन. मैं एक नैयर सर की बात मीन्स ही सेड परफेक्टली एवरीथिंग परफेक्ट. सर भी कॉफ कोल्ड मीन्स एडल्ट वाले खांसी जुकाम और रेस्पिरेटरी डिजीज, मैं पीडियाट्रिक वाला पार्ट देखता हूँ. आप इमेजिन नहीं करोगे, हर महीने 2 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको साइकोजेनिक कॉफ होती है, ब्रेन में प्रॉब्लम में खांसी कर रहे हैं, चेस्ट ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है. कैन यू इमेजिन किस टाइप के बच्चे हैं ये कोई डफर्स नहीं है, क्लास में टॉपर्स सारे. मतलब मेरे हिसाब से मैं 27 इयर्स हो गए मेरे को पोस्ट एमडी, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जो क्लास में लो एवरेज था, सारे टॉपर्स थे. सबकी मदर्स, 90% की मदर्स क्या थी, टीचर्स थी. सोशल प्रेशर था उनके ऊपर टॉप में रहने का. एक नया प्रेशर शुरू हो जाता है हमारे यहाँ, मेरे बच्चे को फुल अटेंडेंस मिले. मतलब मैं ये कहता हूँ क्या बकवास है, मीन्स ये स्कूल की तरफ से क्या प्रमोशन हो रहा है. कूल डेज, बारिश आ गई, हम खुश हो जाते थे आज छुट्टी, उसकी खुशी क्या स्ट्रेस बस्ट करती थी आपको, राइट. आज मेरे को अगर आज आप मेरे को बोल दो कि तू हॉस्पिटल ना जा, 2 दिन में हॉस्पिटल नहीं जाऊं तो मैं शायद बीमार हो जाऊं. क्यों? उसी 4 दीवारी में बैठ के आपको पूरे 2 दिन काटने हैं. इट इंड्यूसेस स्ट्रेस. हर तरीके की प्रॉब्लम आएगी, सोशल प्रॉब्लम आएगी, मदर पेरेंट्स में प्रॉब्लम याद आएगी आपको, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम याद आएगी. जैसे ही आप वर्क प्लेस पे जाते हो, 10 लोगों से मिलते हो, 2 जोक लगते हैं, आप भूल जाते हो क्या आप लीगेसी, नेगेटिव लीगेसी कह रही है. एक लास्ट वाक्य, एक चीज बताता हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है. स्लीप, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्ट्रेस, स्लीप, सुरा एंड स्मोकिंग, ये 4 फैक्टर्स हैं ऐसे जो कहते हैं अगर आप कंट्रोल कर लो चीजें बेटर हैं, राइट. और शुगर, राइट. स्लीप कहते हैं लोग कि याद करने के लिए, अगर मैंने आज कुछ याद किया है, मैंने आपसे कुछ एक्वायर किया है, अगर मैं नहीं सोऊंगा आज तो उसकी एफिकेसी 10% रह जाएगी. मैंने 10 स्किल्स याद की, मेरे को 2 स्किल्स रह जाएगी, मैं 8 आई विल फॉरगेट. ये स्लीप का काम है. स्लीप उसको भेजता है उन जगहों पे जहां पे डीप लेयर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाती है, वो लॉन्ग टाइम सस्टेन्ड रहती है. अनदर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इज, सोना आपको याद करने के लिए नहीं है, कुछ चीजें भूलने के लिए है. आज मेरे साथ कुछ नेगेटिव हुआ, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो नेक्स्ट डे मेरे अंदर वो घूमती रहेगी. स्लीप इज सेड दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉरगेट नेगेटिव थिंग्स. And I am not talking about mythology, I am talking about actual science. So sleep is required to remember, to acquire skills which we all want, but also to forget the negative. And probably stress, sleep, high sugar diet and all these promotes problem
and ultimately it is all pro-inflammatory state leads to obesity, and obesity हमें सबको मालूम है. और एक्चुअल में अगर हमने प्रिवेंट करना है, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम पीडियाट्रिक एज ग्रुप. 3 ओबेज पीडियाट्रिक जन्म देते हैं 2 एडल्ट ओबीज को, मतलब 3 ओबीज पीडियाट्रिक एज ग्रुप के, अल्टीमेटली उनमें से 2 ओबीज एडल्ट बनते हैं. और बॉडी फिगर आपकी खराब हो गई तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होनी है. फिर आप अपने एप्स यूज करते रहो अपने आप को पतला करके, फिर फेसबुक में डालने के लिए, राइट? So probably prevention is the cure. My feeling is that. Well put, well said, डॉक्टर साहब. डॉक्टर नीता, जैसे प्रेशर की बात हमने की, डॉक्टर साहब ने कहा हाउ टू डील विद मेंटल प्रेशर, हाउ टू डील विद पीयर प्रेशर. वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज टू डेवलप अ फ्रेंड सर्कल. बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एक फ्रेंड सर्कल अपना होना चाहिए, और हर सिचुएशन में उसको कैसे कोप करना उसके बारे में हमें उनको वी हैव टू ट्रेन देम एक्टिवली. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आएंगे एंड देन दे आर लेट टू ब्रूड ओवर इट एंड देन दे फाइंड देयर ओन सॉल्यूशंस टू इट. वी शुड नॉट अलाउ दैट. एंड फैमिली में ही देयर शुड बी अ सिस्टम वेयर वी सिट टुगेदर, वी laugh and we cry, discuss problems. That should be there. And definitely a friend circle where the child is able to go out every day, spend some time. Physical activity के लिए भी वो अच्छी बात है, and to share daily issues, that is also helpful. So that is a very good stress buster according to me. तो स्कूल के difficulties भी उसी में डिस्कस हो जाती है. तो बच्चे के लिए एक इवेंट है, उसका ही peer group है, उसमें से निकल सकते हैं. बाकी peer pressure definitely schools are also now tackling. Schools भी aware है अभी कि peer pressure is a thing which can actually drive the child towards mental issues. So schools, I think a lot of NCR schools have now started saying that it is okay not to get marks. First नहीं मिला तो भी ठीक है. So I get it back from my children जब मैं बोल रही हूँ कि क्या हो गया exam में, then he said, chill, it's okay, even if we don't get marks, it is fine. I think so that's coming from the school, which is okay, which is good. So it's not necessary कि सब लोग टॉप करेंगे तभी आगे निकलेंगे, ऐसे भी नहीं है. So that that equalness about life, that has to be there. There has to be a good mix of friends and family. There has to be a good mix of academics and sports and other activities. So that I think from the beginning we have to instill it somehow, and that will help them cope with these stresses later in life. And adults के लिए भी same है. Keep a friends group alive. Keep meeting at least once a week or at least in couple of days. Speak to your friends. अब तो आजकल WhatsApp आ गया तो I think physical meetings have gone down significantly. So that should be revived, and then we should sit together, laugh, cry. That is very, very important to deal with day-to-day work pressure. चलते चलते last concluding remarks Dr. Suresh Kumar से. Dr. Kumar, obesity बहुत बढ़ गई है. We can see it amongst people around us or everywhere. Some quick remedies, some quick if you see the burden of obesity in India, females, you know that 40% of female in our country have the overweight or obesity, and around 35% male. If you see the school-going children, there is a last week article on the Lancet that 1.21 crore school-going children in India are having obesity. So you can see this is because of all physical inactivity and food habits. So the obesity leads to the metabolic syndrome. Ultimately, in the later life, what is metabolic syndrome? You have a combination of 4 things: obesity, hypertension, diabetes, and you have the mainly the truncal obesity. So you have the metabolic syndrome, and you have the further the pre-diabetes or diabetes, later on diabetic in the life. So you have to, how you can prevent obesity, that is very important, that we must have, as the Prime Minister of our country is promoting millets. So millets are very important. They are low-calorie foods. You must do the outdoor activity. Outdoor activity आजकल है ही नहीं, ना के बराबर है. सब लोग जैसे कि सारे पैनलिस्ट ने बताया कि सब मोबाइल में सारे जो प्ले हैं वो मोबाइल के प्ले रह गए. आउटडोर प्ले तो अब खत्म ही हो गया. So we must go out. We must have a good music, good company, so that we relieve your stress. So this is very important. So obesity is the multifactorial. It is the root cause, janani of most of the diseases. If you prevent the obesity by just 2 things, you do the exercise, regular exercise, and you control your calories.
That is the Thank message. you so much, sir. Thank you so much. We are running very short of time. I would request Mr. Ishan Prakash, Director of ANI, to kindly give the concluding remarks. We've had a very concise, illuminating, and timely discussion this morning as a sort of check-in with ourselves, and hopefully the viewers of this conference feel the same way. On the state of our health, the disruption the pandemic caused all of us, and how as a nation and its people, we have learned and grown from this, and now know what the vision forward is going to be. As this is the concluding vote of thanks, I would like to keep this brief, and a special thanks to our Minister, Mr. Mandavia, who came and graced this occasion, to all our esteemed panelists over here. You all are industry leaders, thought leaders over here, and you've given us what the state of the health situation in our country is, and the vision forward for all of us. At ANI, we believe that it is not necessary that allopathy and Ayurveda will be at loggerheads all the time, will be at conflict. We do believe we can all coexist together, and I think this is why we had the panelists that we did and the conversations that we did. And this was a little baby step into the event space. ANI Dialogues has started off with our own Naveen Kapoor ji's initiative, and everyone over here and our team over here, thank you again. And we will keep moving forward. So thank you, everyone. And this concludes our event. Please. Thank you. Thank you so much, Ishanji. I'd request Sanjeev ji to kindly honor our esteemed panelists. Thank you so much. Thank you so much. It's been a pleasure hosting this ANI Dialogues. It has been very enriching for me. I'm sure it must been an enriching session for you as well. Many takeaways, especially from this session. Thank you so much for being with us.